one class and we are trying to cover one act, and probably sometimes it would take two classes as well. But let's see if we can finish. I'm thinking that Indian Contract Act, I'll just explain you the concepts, factual parts. I've just written it and you can remember it. So probably we'll also finish this in one class. Though I had planned to do this in two classes if needed, but might be a little extended class, but we'll try to finish it today because there are topics like CRPC, IPC, which might need more than two classes as well. We're not really sure. Okay, because I think we should give it more time. That's why we'll try to finish Indian Contract Act. Just touch the concepts. Facts will be written in the slides. Will be slides that I'll be sharing, and you can remember it. Okay. So Indian Contract Act total ଆମର ଏତିକି ପଢିବା 10ଟା chapter excluding the preliminary total ଆପଣଙ୍କର 11ଟା କଲେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ section 1 ରୁ section 238 special contracts ଗୁଡ଼ା ହଉଛି indemnity guarantee, bailment, pledge of agency, ତା ଆଗରୁ communication acceptance କ'ଣ, revocation କ'ଣ, contract, voidable contract, void agreements କ'ଣ, contingent contracts, performance of contracts, certain relations resembling those created by contract, and consequences of breach of contract ବି ତା ଆଗରୁ ପଢିବା. So general contract and special contract ଦିଟା ଭାଗରେ divide କରିକି we'll have to study. Coming to the introduction, it is the Act number 9 of 1872. Can anyone tell me which act also came into force in 1872? Evidence, Indian Evidence Act. Yes, Indian Evidence Act also came into force in 1872, and with effect from 1st September 1872. It's derived from the Latin word contractum, that is drawn together. Okay, whether it is a substantive law or a procedural law, yes, it is a substantive law, and it's a right. It creates a right in it creates a right in personam. That means it does not create a right in rem. That is not a right against the whole public, but a right against a particular person with whom you have entered into a contract. And if we really want to understand what is a contract for any person who is starting with contract for the first time, we have to realize that contract is what? Contract. We are surrounded by contracts. Starting from when you purchase something on Amazon or Flipkart, that's also a contract. Okay, they show something to you. Just tell me before going to, I want to check your concepts. Flipkart shows something online. There is suppose a Great Indian Sale is going on, and on sale it is showing that an iPhone 15 Pro Max is for rupees 95,000. Whether this is an offer or an invitation to offer, or what is it? Invitation to offer. Okay, so somehow the concepts some people have. Okay, I just wanted to check that. Okay, so anyway, coming back to, we are surrounded by contracts. Every day we are dealing with contracts, and then Britishers thought that yes, as we are surrounded by contracts and every now and then we are having to deal with contracts, that's why they codified the law of contracts. That jodi gote ke contract karibo tale ko case taku ame contract will recognize kariba, and then what are the rights that will be given to the parties, and what will be the obligations that will be given on them. All of that has been discussed in detail in Indian Contract Act. Now what is a contract? We will study that. Chapter 1 to 6 hochi general contract, or chapter 8 to 10 hochi special contract. As I told you, aguru thila sales of good au partnership भी contract ର part thila, but ଏବେ ସେଟା repeal ହେଇକି SOGA, that is Sales of Goods Act, and Partnership Act ହେଇ ସାରିଲା ନାହିଁ. Indian Partnership Act, SOGA and IPA, it has already formed itself into that. Now these are repealed. These are already repealed. These chapters are repealed.
But indemnity guarantee, bailment pledge and agencies are still there in the Indian Contract Act as special contracts. Okay. Now, जानिया पे हेले फर्स्ट हमको जानिया पड़िबो कॉन्ट्रैक्ट रो फर्स्ट होची ऑफर ता आगुर गोटे इन्वर्शन टू ऑफर भी अछि बट जदी पूरा प्रिलिमिनरी स्टेज जिबा फर्स्ट होची ऑफर गोटे लोक जदी काहाकू ऑफर कला and that offer is accepted that becomes a promise. I'll explain जैसे बिति जानंतु ऑफर जतले एक्सेप्ट हे जाय that becomes a promise and se promise रे जतबेले consideration involve हुए that becomes an agreement. That means भाबंतु ए कहला तू मो जमी नबु की there is a plot of me whether will you take it. Now B says yes. A said कहला नबु की whether will you take it. Now B said yes. Whether will you take it, that is an offer. B कहला जे yes mu nebi, that is an acceptance. Now that together both of these became promise. Now ए कहला ठीक अछि जदी नबु केते टका दबु मते 5 लाख टका दबु. So promise plus consideration. एटी consideration पळे आसला. Consideration माने किछि एटा value आपण दियंती ताकू कहै छै consideration. Now that become an agreement. That becomes an agreement. An agreement which is enforceable by law, that is a contract. Agreement which is enforceable by law is a contract. So ଗୋଟେ offer ଥାରେ କୁ ଯଦି accept ହେଇଗଲା that becomes a promise. Promise when it is accompanied with consideration becomes an agreement. An agreement enforceable by law is a contract. We have to know that every agreement is not a contract, but every contract is an agreement. Every contract is an agreement. Okay, so agreement is the genus and contract is the species. Agreement is the genus and contract is the species. Okay, আমি জানলে এটা হচ্ছে this is the basic. Now we'll study in detail কোন exactly contract. So 2H रे define कला कोन contract कहला agreement enforceable by law. Simply it says an agreement enforceable by law is a contract. It can be oral and written, किछि असुविधा नहीं, but an agreement enforceable by law is a contract. Now, what is an agreement? सेटा define कला कोथरे 2E रे. सेटा define कला 2E रे. Now 2E, what did it say? That every promise and every set of promise forming the consideration for each other. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. जे दी रेंस आसला गोटे होची प्लुरालिटी माने दीटा पार्टी थिबे. There must be two parties and सेमाने कोन करथिबे ये ताकू गोटे प्रॉमिस करथबो ये ताकू कोन प्रॉमिस करची जे मु तते जागाडा देबी सिए ताकू कोन प्रॉमिस करची त मु तते 5 लाख टका देबी. So there are two promises between these parties and they are the consideration for each other. Property ପାଇଁ ସେ कोन ଦଉची 5 लाख टका 5 लाख टका ପାଇଁ ସେ कोन ଦଉची property. So every promise and every set of promises which form the consideration for each other, that is an agreement. So first होची multiple parties अछंती plurality of parties थिबो and सेमाने बुझुथिबे same thing in the same sense ताको कोनती consensus ad idem same thing in the same sense बुझी की सेमाने एक दूसरे को promise करथिबे which are forming the consideration for each other. That is an agreement. Now, of course, if you want to dwell into detail, we can dwell deeper, but as it is a marathon, we'll just stick to the overall concept. Now, type of contract. Type of contract formation को नेकी तीन प्रकार, that is express contract, implied contract and quasi contract. Express contract, implied contract and quasi contract formation को नेकी केमिति form होची आपण जदी express words रे ताकू करूचंती ताले गोटे को टाइप रो contract ताकू express contract होइबा. implied terms रे जदी होची that is an implied contract and quasi contract is a separate nature. हम सेटा भी ताकू देखिबा. Now contract ता valid ना नहीं ताकू नै की पुनी सेमति सेटा it is of different types. First होची valid contract, the contracts that we are concerned with.
ସେଥିରେ ହିଁ କିଛି rights and obligations create हुए, otherwise rights and obligation as such create हुए नहीं. Unenforceable contract ତା ମାନେ agreement ତ ଅଛି, agreement पर्यंत ठीक stage रे पहुंची गला, किंतु it is not enforceable by law. କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲା ନା ଯେ an agreement enforceable by law ହବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି contract ହବ. बट जदि एग्रीमेंट रु ये एनफोर्सेबिलिटी टा कटि जीवो, एनफोर्सेबिलिटी टा रहिबोनी, दिस इज माइनस द एनफोर्सेबल बाय लॉ, देन इट विल बिकम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. ना नेक्स्ट इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट सिमिलरली आपण जदि गोटे इलीगल जिंस किछ करियो चाहउचंती, कोकेन दिने पे करचंती, दैट्स एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. नाउ void contract and voidable contract. Void contract and voidable contract भी कौन पड़ेगा? Void contract जेतेबेले that is not valid at all. Voidable जेतेबेले it can be declared void at the option of one party. At the option of one party. तार भी किछि reason अछि कौन केतले करि हबो, but at the option of one party if it can be declared void, then that is a voidable contract. Contract एमती simple questions ही आसीबो, conceptual नहले एमती कोन कोठी कोन डिफाइन हेची, कोठी कोन हेची एथिक आसीबो, एजेंसी कोन, बेलमेंट कोन, प्लेज कोन, हाइपोथेकेशन कोन, एमती जिंस ही आपण आसीबो, कम्युनिकेशन केतले एक्सेप्ट हुए, केतले रिवोक हुए. So all of these basic type of questions can come in contract act. Okay, next ताले ଆମେ ତିନିଟା मेन जिंस we are dealing with. गोटे होची void agreement, जाकू कुआ जाय हमें void ab initio भी को, because they are void from the beginning. Void from the beginning, just like our institute. हमारा नाम होची ab initio. So void in ab initio is void agreement. Minor सहित जदि गोटे agreement करिवे, unsound mind person सहित जदि गोटे agreement करिवे, an agreement in restraint of marriage काकू कहउचंती जे तू तो स्त्री को छाड़ी की पळे आस. Okay, now agreement in restraint of legal proceeding काकू सु नॉकर, in restraint of trade तू तोर trade commerce नॉकर. Uncertain agreement to do an impossible act, आपण गोटे impossible act करिया कहउचंती. Impossible contingent event, unlawful consideration, unlawful object, ये सबुरे आपनकर कह हला void agreement. Void agreement. What is a void contract? Void contract रे it's not void from the beginning, but subsequently it is void. Subsequently it is void because of some supervening circumstances. कौन हला? आगो एग्रीमेंट टा वायलेट थिला, किंतु परे सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी आसी गला. दैट्स ए void contract. माने ए बी को कहिथिला मु मो कुकुरटा तते बिकिबी 5000 टका. Now that dog died. Whether A will be able to sell it anymore? No, will not be able to sell it. So that's a supervening impossibility. Subsequent illegality. Subsequent illegality. Suppose भाबंतु गुजरात रे गोटे लोक करथिला ए बी सहित गोटे कॉन्ट्रैक्ट करथिला जे से ताकू प्रति वर्ष प्रति मास 5 trucks of liquor ता ये को supply करियो. But what happened? That Gujarat became a dry state. That means there is no alcohol anymore. There is no alcohol anymore, which also the BJP plans for our state. BJP कर दबो कहिची आसले ड्राई स्टेट बहुत जल्दी करियो. Okay, so जदि ड्राई स्टेट हे गला, now whether A will be able to supply it, A will not be able to supply it. A will not be able to supply it. So that's a subsequent illegality. So कौन हबो? That contract is void. Contingent event ପାଇଁ थिला, but that becomes impossible. Contingent event ପାଇଁ थिला, but that becomes illegal. से सब केस रे भी हबो. गोटे मु एमता किछि इवेंट कहउथली जोटा uncertain थिला, but that became impossible. That became impossible. And contingent event, if that becomes illegal, सेतले भी आ repudiation of voidable contract. जेतले गोटे voidable contract थिला और से ताकू चाहू जी void करिया पई, ताले repudiation कले गोटे voidable contract रो, that becomes a void contract.
Now what is a voidable contract? Free consent ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କୁ voidable contract କୁହାଯାଏ, and that is at the option of one party ସେଟା void କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯେମିତି repudiation କରିକି ସେ void କରିଦେଇ ପାରିବ କେତେବେଳେ fraud କେସରେ, coercion, undue influence or misrepresentation ଏଭଳିଆ କେସେସରେ voidable contract ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର free consent ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ? ସେଇ କଥା ହିଁ void agreement କହିଥିଲି, void from the beginning, grounds କଣ? restraint of marriage, restraint of legal proceeding, uncertain agreement, wagering agreement, impossible event, impossible act। valid contract 2J ରେ କହିଲା କଣ? ଏଟା 2G ରେ କହିଲା valid void contract କଣ? valid when made but subsequently void। ground କଣ? supervening impossibility, subsequent illegality, repudiation of voidable contract, contingent event becomes illegal। voidable contract କଣ? 2I ରେ ଦେଲା valid when made but there is no free consent। consent is not free କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ coercion, undue influence, fraud, mistake or misrepresentation ଥିବ ସେତେବେଳେ। ଓକେ, ଯଦି voidable contract କୁ accept କରୁଛି ସେ ପାର୍ଟି ଯାହା ଅପସନରେ ସେଟା void ହେଇପାରିବ, then that is a valid contract। ଯଦି ସେ ନାହିଁ accept କରୁନି ତାହେଲେ it becomes void। ଓକେ, does not mean that it is void ab initio। voidable can stay। voidable ଥିଲେ ବି ସେଟା ରହିପାରିବ ଯଦି ସେ ପାର୍ଟି ଯାହା ଅପସନରେ ସେଟା voidable ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, then it can stay as such। void agreement ରେ all essential elements of valid contract are missing। whether it can be enforced, no it cannot be enforced। damages ଦେଇ ହେବ କି? no damages ବି ଦେଇ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ସେଟା void from the beginning। minor ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ contract କରିବି, that is void from the beginning। minor is not capable, he is not capable of loss, so that's void from the beginning। not legally binding, binding କି legally no binding ନୁହଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି cocaine sell କରିବା ପାଇଁ agreement କରିବା, that is not a that is a void agreement altogether। now what's a void contract? କହିଲି valid when made but subsequently void। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ essentials of a valid contract ନାହିଁ, except free consent, ବାକି କୋଉଥିରୁ ଗୋଟେ ନାହିଁ। whether it can be enforced, no it cannot be enforced। agreed party ସେଠି damages ମାଗି ପାରିବ କି? yes ମାଗି ପାରିବ, but ଯେତିକି benefit ନେଇ ଯାଇଥିଲା ସେତିକି restore କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ମାନେ ଆଉ କିଛି extra benefit ମାଗି ପାରିବନି। legally binding କି? no not legally binding। ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି କୁକୁରକୁ ବିକିବା ପାଇଁ କହିଲା but କୁକୁର ପରେ ମରିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଟା that is an example। now voidable contract କଣ? ସେମିତି 2I ରେ କହିଲା valid when made but certain elements of valid contract are missing। କୋଉଟା missing ଅଛି? ଯେ free consent of parties are missing। okay, whether it can be enforced, yes it can be enforced if the agreed party do not repudiate the contract। ଯଦି agreed party ହିଁ contract କୁ cancel କରିବା ପାଇଁ or repudiate କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, then it can be enforced, no issues। now injured person, whether it can claim damages, yes injured person can claim damages and has the right to take legal action to recover damages। okay, and it is binding if contract is not repudiated, because ମୁଁ କହିଥିଲି valid ବି ରହିପାରେ ଯଦି କେହି ତାକୁ repudiate ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା valid ବି ରହିପାରେ। A under coercion sells his land of 1 crore to B at a price of rupees 10,000। କଣ କରୁଛି? ମୁଁ କଣ କଲି, A କଣ କଲା ନା B କୁ କହିଲା ତୁ ଯଦି ଏଟାକୁ ନ ବିକିବୁ ମତେ 1000 ଟଙ୍କାରେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇଯିବି। so ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବିକିଲା, so it is under coercion। so can we say that the consent is free? no the consent is not free। undue influence କରିକି ସେ ତାର superior officer ତାକୁ undue influence କରିକି ତାକୁ କଲା, or ତାକୁ misrepresentation କରିକି ତାକୁ ମିଛରେ ସତ କହିକି ଦେଖେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାଟା ଆକ୍ୱାର ହେଇଯିବ, ତତେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ମତେ ବିକିଦେ। ସେ କଣ ହେଲା ନା misrepresentation କରିକି ତାକୁ କିଣିଦେଲା। ଓକେ, ସୋ ଯାହାବି ଆମେ ସବୁ ପଢିଛେ ଯୋଉ 5ଟା ଜିନିଷ, କୋଉଟା coercion, undue influence, fraud ବି କରିକି କିଣୁ, misrepresentation କରୁ କିମ୍ବା mistake କରି କିଣୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ? voidable ହବ। ଓକେ, ସୋ valid contract ର essential କଣ? ଅଫର ରହିବ, ଅଫର କିମ୍ବା ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାହାବି ସେଟା ରହିବ, ତାପରେ acceptance ତାର ରହିବ, ତା ସହିତ free consent ରହିବ। ସୋ ଅଫର ବା ପ୍ରପୋଜାଲ ରହିବ, ତା ସହିତ acceptance ରହିବ, ତା ସହିତ free consent ରହିବ, ତା ସହିତ capacity of parties ଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ they are competent, ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ consideration ଟା lawful, ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ lawful object
ता सहित देखा पड़ो जे एक्सप्रेसली भॉइड डिक्लेयर हेनी आ ता सहित इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ए सबू रहिबा दरकार। ओके लॉफुल ऑब्जेक्ट मु एना कहबी का सहित ए विषय तो गोटे कॉन्ट्रैक्ट करिवो जे यू हैव टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन and for that I will pay you certain amount. No, that's unlawful object. Unlawful object. Unlawful consideration जे तू मो सहित if you establish an FIR then only I will give this property to you. I mean FIR जदि रखिबु ताले मु तते तो सहित मु तते ये property टा देबी. That is consideration is unlawful. Capacity of parties जदि मु कहबी गोटे माइनर सहित कॉन्ट्रैक्ट करछि गोटे अनसाउंड पर्सन सहित कॉन्ट्रैक्ट करछि ए पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ लाइक एन इंसॉल्वेंट पर्सन ता सहित कॉन्ट्रैक्ट करछि फ्री कंसेंट एठी हमें पढिछ ऑलरेडी सेमती ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस भी थिबा दरकार आउ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी थिबा दरकार देन ओनली इट कैन बी कॉल्ड ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके नाउ व्हाट इज अ प्रपोजल और ऑफर? One person signifies his willingness to other to do or abstain from doing anything. One person signifies his willingness to do to the other to do or abstain from doing anything with a view to assent of other. Okay, कौन कहला? गोटे लोक तार willingness signify करूची काहाकू another person को कौन पाई and कौन willingness करूची that I will do something or I will not do something. And why am I doing that? Why am I doing that? So that I will obtain an assent of other. I will assent another. मु कहूची तते ए बी को कहला जे मु तते मोर घरटा को बिकिबी. So what is it saying? That I have a willingness to sell this land, to do this, that means to sell this land. Okay, so that तू एटा को accept कर तोर assent एट मिलू मु सेति पई एई proposal टा जतले देबी that is called a proposal or an offer. Okay, and जे proposal दिए ताकू कोन कहबा promiser ना promisee ताकू कहबा promiser. Okay, promiser जे promise कला ताकू promiser proposal जे दिए ताकू कह जाए promiser जो offer जे दिए ताकू कह जाए promiser. Now what is a promise? Person to whom सॉरी मो हाँ आपको एठू डायरेक्टली कह देली प्रपोजल एक्सेप्ट होला पर ही प्रॉमिसर हबो नले हबोनी. सो प्रॉमिस केतले हुए जेतले जहा को प्रपोजल टा दिया हैला से जेतले तार एसेंट सेठी दे दिए देन प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड. नाउ ए सेठी तार एसेंट दे देला जे हां मु जागाटा किनिबी तोर 5 लाख टका दउची आ मु जागाटा किनिबी. नाउ दिस प्रपोजल ऑफ सेलिंग दिस लैंड इज एक्सेप्टेड. प्रपोजल थिला ताकू जेतले एक्सेप्ट कराई गला that becomes a promise. That becomes a promise. Okay, so proposal is said to be accepted when the person to whom the proposal is made he signifies his assent, then in that case proposal is said to be accepted. Now proposal when accepted it becomes promise. Proposal को जतले accept करा जाए that becomes a promise. Section 9 रे देची express promise हे परिबो implied promise हे परिबो that means in words directly in words and otherwise than words that means conduct of parties रे भी promise हे परिबो. Okay, now 2C says promiser किए जे proposal करे promisee किए जे accept करे proposal जे accept करे proposal ताको हमें कहू promisee. Okay, now what is an agreement? Agreement कौन? Agreement होची every promise or every set of promise forming consideration for each other. गोटे promise किंबा set of promises if they form consideration for each other. मु कहिथिली ये गोटे promise करूची कोन ये गोटे promise करूची जे land टा बिकिबो ताकू B promise करूची जे मु तते 5 लाख टका देबी. So this is a promise by B and this is a promise by sorry, this is a promise by A and this is a promise by B. And these both promises form consideration for each other. That means
land ro consideration hoji 5 lakh consideration hoji land. Now that becomes an agreement. And gote agreement jodi seta law dwara enforce hei paribo, then according to 2H it's a contract. 2H it's a contract. Okay. Now promise can be a reciprocal promise koji, promise which form consideration or part of consideration for each other. That's a reciprocal promise. That's a reciprocal promise jota ki 2F re कहला. Okay. Next, void agreement which is not enforceable by law directly. Voidable contract agreement ta enforceable by law. Voidable contract ta kona agreement enforceable by law, but that is at the option of one or more parties. Okay, jetebele se reject kar dabo, that is void, but accept jetele kar dabo, that is a valid contract. Okay, now a void contract kono, void contract which is a contract which is valid from beginning, but it ceases to be enforceable by law. That's why it is a void contract. Okay. One person signifies his willingness to another to do or abstain from doing anything is an offer. Parties to the offer hoji offeree, offerer, acceptor, promisee, promiser, jaha bhi apana taku kahi paribe. Now, offer essentials kono? First hoji, it may be express, implied, specific, general. Expressly kari paribe, section 9 re kahila, implied bhi kari paribe, specific offer kari paribe, general offer bhi kari paribe. But it must intend to create legal relationship of certain and definite हवा दरकार. माने uncertain offer I can't make, uncertain offer I cannot make. Must be communicated to offeree, ताकू जणे दरकार. मु घरे बसी की भाबुची मु निजे भाबी देली जे मु ताकू दवा ପାଇଁ भाबुची. No, that's not an offer. That has to be communicated to the offeree. Okay, can be subject to any condition? Yes, it can be subject to any condition. Now, cross offer, counter offer, I am going to bujiba pare. I'll explain you later. Our invitation to offer kono B ame bujiba. Okay. Answer to question is a not offer. Mu gote kono question pacharli and se tar answer daba is not an offer. Bhabantu A B ku pacharla tamo ghorata e jo rakhicho tar value kete? Tamo ghorata jo achi tar value kete? Ye कहला 45 lakh. So A कौन कर जैसे कि 45 लाख नहीं देखी कुछ दियो अबे मुते घरटा because I'm offer कलो. No, that's not an offer. You asked me a question, I gave you an answer. That's not an offer. Seମିତି invitation to offer कौन offer ର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ invitation to offer କରନ୍ତି. Invitation to offer ରେ କଣ ହୁଏ? Invitation to offer ଆପଣ କରନ୍ତି now when someone signifies or someone shows the interest, then deciding whether you want to make an offer or not, you can offer it. ଯେମିତି Flipkart ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ iPhone 15 Pro Max ମିଳିବ 95,000 ରେ. Okay, now ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଟ ରେ ଆଡ୍ କଲେ and place କରିବାକୁ ଗଲେ order ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, that is that then that place of order place କରିକି କଲା ବେଳକୁ that becomes an offer and ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାପରେ pay କଲେ नहीं ଯେତେବେଳେ ଆପଣ pay କରିକି ତାକୁ accept କଲେ cash on delivery କରିକି accept କଲେ, that is an acceptance. COD କରିକି ଯେତେବେଳେ accept କଲେ ଆଉ ତାକୁ pay କରିଦେଲେ ଆଉ return କଲେନି ଆଉ ଘରେ ରଖିଦେଲେ, that becomes an acceptance. So invitation to offer is an initial stage of offer. Now what is a cross offer or a counter offer सेटा भी बुझे दउची. Cross offer कोन और counter offer कोन? A B को कहला जे ए लैंड टाकू मु तते 5 लाख टका रे बिकिबी. B कोची ताकू ना 5 लाख टका अधिक हो जाउची, गोटे काम करो मु तुमको 3 लाख टका देबी, तमे ए लैंड टा दियो. ओके, सो ये गोटे ऑफर कला, सी ताकू आ गोटे ऑफर कला, दैट्स अ काउंटर ऑफर. बट ए दि जण एक दूसरे रो ऑफर जानी की ऑफर करा करी होचंती. सो A made an offer to B and B knowing this offer made another offer countering that offer. That's a counter offer. But this is a counter offer.
But what's a cross offer? Cross offer is when A is making an offer that I will sell this property for 5 lakh, and B, without knowing, is making an offer that I will buy this property for 3 lakh. Okay, so both do not know the existence of the each other's offer. B ଜାଣିନି A ଏମିତି offer କରିଛି ବୋଲି, A ଜାଣିନି ଯେ B ଏମିତି offer କରିଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ଏକ ଦୁସରେକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା offer କରିଦେଇଛନ୍ତି. That's a cross offer. Like it can happen in the post or something. Post ରେ ପଠାଲେ ଆପଣ normally cross offer ଟା arise କରିପାରେ. ମୁଁ post ରେ ପଠେଇଛି ତମ land ଟାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ମୁଁ interest ନେଉଛି, ସିଏ କହୁଛି ତମ ମୋ land ଟାକୁ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବା ପାଇଁ interest ଦେଖଉଛି. That's a cross offer. That's not a counter offer. That's a cross offer. Okay, explain କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର cross offer and counter offer. Coming to communication, acceptance and revocation of proposal. Communication, acceptance and revocation of proposal. केमिति communicate करा जाए से proposal, केमिति accept हुए से proposal and केमिति revocation हुए, because सब खेल तो यही communication, acceptance and revocation रो proposal टा सिना communicate हबो तापरे accept हबो ताहेले जाई कि सेटा आपण ताकू हमें contract आडू नहीं परिबा. So how they are made से कहला आपण जहां भी करंतु communication, acceptance, revocation of proposal हो कि acceptance कला परे ताकू भी revocation करिया को चाहतु, acceptance करी कि ताकू revoke करिया को चाहतु, are made by an act or omission of a party. सेटा आपण expressly किंबा impliedly आपण communicate भी करि परिबे, accept भी करि परिबे और revoke भी करि परिबे. रिवोक भी करि परिबे का प्रपोजल को भी रिवोक करि परिबे और एक्सेप्टेंस को भी रिवोक करि परिबे. हम कबे एक्सेप्टेंस को केमते रिवोक करिवे, एक्सेप्टेंस को केमते रिवोक करिवे कहले ए बी को कहला जे मु तते 5 लाख टका रे कोटे चिठी लिखला कहला 5 लाख टका रे मु तते ए घरटा बिकिबी. बी कहला ठीक अछि मु तते 5 लाख टका देबी, 5 लाख टका देबी आ से घरटा करिबी बोली गोटी कहि कि गोटे पोस्टे करिछि. ओके, पोस्ट करिछि बट तापरे से रियलाइज कला कि ना एटा करिवा नहीं, तो ही इमीडिएटली कॉट ए ट्रेन एंड वेंट टू ए एंड सेड नाही मते एटा ए जो मु जो पठैथिली ए लेटर टा एक्सेप्टिंग इट, दैट आई वांट टू रिवोक इट, सो एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कराई परिबो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल लेटर. ओके, नाउ कम्युनिकेशन बेले बेले इंटर प्रेजेंट्स हुए ता माने फेस टू फेस एका समय जतले माने प्रेजेंट थिबे आ बेले बेले से माने फेस टू फेस प्रेजेंट नथिबे ताको इंटर एब्सेंटेज कम्युनिकेशन भी होंती, जोटा कि हमें देखिया. नाउ सेक्शन 4 कहला जे कम्युनिकेशन केतेबेले कंप्लीट हुए, ये गोटे तो प्रपोजल दोची, ए प्रपोजल टा किंबा ऑफर टा केतेबेले कम्युनिकेट हला बोली धरा जिवा, प्रपोजल टा केतेबेले कंप्लीट कम्युनिकेट हला बोली धरा जिवा. काहेना ए ताकू गोटे बी को ऑफर दबो ताले सेटा सिना ताकू ऑफर टा कम्युनिकेट हेले ही सिना से दबो. तो सेट से कोन कहला कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. ता माने ए जतेले बी को गोटे पठेला लेटर 5 लाख टका रे मु देबी बोली ए जगटा जतेले पठेला सेतेबेले कम्युनिकेट हला कि ना, जेबे बी पाखरे पहुंचिला 1 जनवरी रे सपोज ए पठेला जे मु 5 लाख टका रे जगटा दबा को चाहूची, सेटा बी पाखरे पहुंचिला जाय कि 6 जनवरी रे, ताले को दिन ऑफर टा कम्युनिकेट हला 6 जनवरी रे ऑफर टा कम्युनिकेट हला. ओके, बट एती मन रखंतु जे अगेंस्ट द प्रपोजर, दैट मींस द पर्सन हु मेक्स इट, सेते बेले एटा होची इंटर एब्सेंटिस. एटा तो मु कहली एटा होची डायरेक्टली फेस टू फेस रे हे जाउची से, बट जते इंटर एब्सेंटिस होची ता माने जते बेले फेस टू फेस नाहंती सेते बेले अगेंस्ट प्रपोजर केतेले कमिट होची जते बेले व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम. जते बेले से पठे देला जे मु 5 लाख टका रे एटा मु बिकिया को चाहूची, सॉरी एटा एक्सेप्टेंस, एटा तो प्रपोजल कहली, एटा एक्सेप्टेंस रो कोन एबे ए बी को ऑफर कर देइची जे मु ए लैंड टा को बिकिया को चाहूची 5 लाख टका रे, देन ऑफर इज कंप्लीट, दैट प्रपोजल इज कंप्लीट. नाउ बी ताको एक्सेप्ट करी कि गोटे
लेटर लिखिला कहला जे हां ए लैंड टाको मु 5 लाख टका रे किनिया को चाहूची ठीक अछि तू जा ऑफर कलु आई एम एक्सेप्टिंग इट नाउ against the proposer केतेबेले कंप्लीट हुए when it is put in the course of the transmission to him and against the acceptor it is complete when it comes to the knowledge of the proposer so a against रे कंप्लीट हे जाय जेतेबेले ये पठै देला किंतु बी against रे कंप्लीट हुए केतेबेले जेतेबेले सेटा आसिकी ए पाखरे फाइनली पहुंचे सेतेबेले ही बी against रे एक्सेप्टेंस टा कंप्लीट हुए माने ता आगुरु जदि बी चाहिबो से एक्सेप्टेंस को से रिवोक कर देई पारिबो जे पर्यंत सेटा ता पाखरे टोटली न पहुंची से पर्यंत एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रॉमिस इज नॉट कंप्लीट एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीट जेतेले से संग संग पठे देला बट एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रॉमिस इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर ओके नाउ सेंती एटा तो एक्सेप्टेंस प्रपोजल केमति कंप्लीट हला एक्सेप्टेंस केमति हला जानले सेंती रिवोकेशन केतले कंप्लीट हुए रिवोकेशन कंप्लीट केतले हबो जदि आपण से ओडे पठै चंती ऑलरेडी एक्सेप्टेंस करिया को तो कहि चंती पुणी चाहउचंती सेटा को रिवोक करिया पे पुणी चाहउचंती ताको कैंसिल करिया पे कोन कहला अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट जेतेबेले रिवोकेशन के करिया को चाहूची जेतेबेले सीए लोकटा ओडे पठैला सेतेबेले when it is put in the course of the transmission for person to whom it is made and केतेबेले कंप्लीट हुए अगेंस्ट पर्सन टू whom it is made when it comes to his knowledge जेतेबेले से लोकर नॉलेज को आसे से रिवोकेशन ता सेतेबेले ता अगेंस्ट रे कंप्लीट हुए बट जेतेबेले आपण द पर्सन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट when it is put in the course of transaction माने ए बी सहित गोटे कॉन्ट्रैक्ट पई गोटे एक्सेप्ट करिछि बट ताकू पुणी रिवोक करिया को चाहूछि कि ए बी सो जेतेले जस्ट से पठेला आ अगेंस्ट रे रिवोकेशन कंप्लीट हे गला बट जेतेले एटा जाय कि ए पाखरे पहुंचबो सेतेले जाय कि ए अगेंस्ट रे रिवोकेशन टा कंप्लीट हबो दिस कांसेप्ट जदि आपण पूर्व बुझ नथिबे टिके वियर्ड लागी पारे बट दैट्स द बेस्ट वी कैन डू इन मैराथन ताठो अधिका हमें जाई परिबा नाही नेक्स्ट असला कोन केबे रिवोक हे परिबो केबे रिवोक हे परिबो प्रपोजल किमा एक्सेप्टेंस टा कहला प्रपोजल रिवोक हे परिबो एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर ता माने जेतो पर्यंत कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर से पर्यंत प्रपोजल टा को हमें रिवोक करी परिबा आ एक्सेप्टेंस टा के पर्यंत रिवोक हे परिबो acceptance revoke he paribo at any time before communication of acceptance is complete as against the acceptor okay acceptance टा जे परंत पुनी कंप्लीट न होई as against the acceptor ता भितरे भी आपण रिवोक करि परिबे बट थरे सेटा एक्सेप्ट हे गला against the acceptor the acceptance is complete against the acceptor ता परे रिवोक हे परिबो नै कोन acceptance की प्रपोजल भी सेमति जदी थरे प्रपोजल भी थरे जदी एक्सेप्ट हे गला अगेंस्ट द प्रपोजर ता परे आपण आउ ताकू रिवोक करि परिबे नाही प्रपोजल को रिवोक करि परिबे नाही ओके सो एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर केतेबेले when it is put in the course of the transmission to him so as to be out of the power of the acceptor जदी पोस्ट रे कराउची ताले एटा हबो आउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर केतेबेले when it comes to the knowledge of the proposer when it comes to the knowledge of the proposer okay okay एग्जांपल देखो कम्युनिकेशन ऑफर ए कोन कला ना बी को ऑफर कला 1 जनवरी रे लेटर पठेला लेटर रिसीव कला बी केबे 4 जनवरी रे से दिन 4 जनवरी रे ऑफर रो कम्युनिकेशन कंप्लीट हैला बोली हमें धरिबा ओके सेंती कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बी कोन कला ना पुनी 6 जनवरी रे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच कला आउ 10 जनवरी रे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए पाखरे पहुंचिला ताले अगेंस्ट ए केतले कंप्लीट हला अगेंस्ट ए केतले कंप्लीट हला ऑन 6 जनवरी जेते बेले बी पठेला सेते बेले सेटा एक्सेप्टेंस टा कंप्लीट हे गला पठेला माने कंप्लीट हे गला एबे आउ ए विथड्रॉ करि परिबो नाही एबे आउ ए विथड्रॉ करि परिबो नाही बट अगेंस्ट बी केते बेले कंप्लीट हला 10 जनवरी 10 जनवरी जेते ता पाखरे एक्सेप्टेंस पहुंचिला सेते बेले अगेंस्ट बी कंप्लीट हला ता परे बी आउ विथड्रॉ करि परिबो नाही एक्सेप्टेंस ता पूर्वुर जे चाहिबो एक्सेप्टेंस को विथड्रॉ करि पारिबो संदी एबे रिवोक करिया को चाहउचंती कि से माने रिवोक करिया को चाहउचंती ताले भी केमति रिवोक करिवे
जदि लेटर ऑफ रिवोकेशन डिस्पैच कला 2 जनवरी रे किए ए आ लेटर ऑफ रिवोकेशन रिसीव कला ऑफरी 3 जनवरी रे ताले ऑफर इज रिवोक्ड ऑन 3 जनवरी जेतेले ऑफरी रिसीव करूची सेति पई acceptance by B is not valid. Acceptance by B is not valid काहेकि ना acceptance टा केबे कंप्लीट हेतांता acceptance टा केबे कंप्लीट हेतांता acceptance टा कंप्लीट हेतांता केबे देखंतु acceptance टा कंप्लीट हेतांता आपनकर 6 जनवरी रे कंप्लीट हेतांता अगेंस्ट दी प्रपोजल ए अगेंस्ट केते कंप्लीट हेतांता 6 जनवरी रे ता भीतर जदि से रिवोक करिया को चाहूची 3 जनवरी रे पठेकी जदि से रिवोक कर देला से गोटे पठेई देला नॉर्मल पोस्ट रे तापरे देखला कि नाही मते रिवोक करियार छी मु स्पीड पोस्ट रे पठेकी ताको रिवोक कर देबी गोटे दिन रे पहुंची गला आ ताको रिवोक कर देबी जे आई एम रिवोकिंग दी ऑफर दैट इज मेड and that is not communicated that may be communicated to you in the course of the day and now I am revoking that offer so तापरे acceptance जदि भी करूची that is not valid okay सेमती एटी लेटर रिवोकेशन जदि 2 जनवरी डिस्पैच कला आ लेटर रिवोकेशन रिसीव कला 5 जनवरी रे then offer is revoked and 5th January and that is before the acceptance was sent by the offeree therefore acceptance by B is not valid because B seti pathitala 6 January okay now but एठी जदि 2nd January पठितला और 7 January पठिला 7 January पहुंचिला but B already post कर दिथिला केबे 6 January रे पठितला ना B केबे पोस्ट कर दिथिला B had posted this on 6 January 6 January पोस्ट करथिला but सेटा जदि पहुंचिला 7 January रे ताहेले कोन हबो सेठी रिवोकेशन ऑफ ऑफर पॉसिबल नो काहे कि ना ऑलरेडी एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए एक्सेप्टेंस जेतेबेले ए अगेंस्ट रे कंप्लीट हे जाईची ताहेले से आ ताकू रिवोक करि परिबो नाही ताहेले आ ताकू रिवोक करि परिबो नाही ताहेले पूरा जदी गोटे समरी रे जानिबा ताहेले ए बी को जदी गोटे ऑफर करूची ताहेले प्रपोजल रो कम्युनिकेशन केतेबेले हैला प्रपोजल रो कम्युनिकेशन केतेबेले हैला की कहबो जेतेले ए कल्ला ना बी पाखे जेतेले पहुंचिला कोंदु बी पाखरे तो पहुंचला बी पाखे जेतेले पहुंचिला व्हेन इट रीचेस बी सेमती एक्सेप्टेंस केतेबेले कंप्लीट हैला ए अगेंस्ट रे कोंदु सेतेबेले बी पठेला जेतेबेले बी पठेला यस जेतेबेले बी पठे देला सेतेबेले ए अगेंस्ट रे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हे गला बट जेतेबेले पहुंचिला ए पाखरे सेतेबेले बी अगेंस्ट रे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हैला क्लियर पर्यंत नाउ आई वांट टू रिवोक द प्रपोजल प्रपोजल रिवोक करि परिबो कि हां प्रपोजल रिवोक करि परिबो काहे कि ना प्रपोजल जे पर्यंत बी पाखरे न पहुंचिची से पर्यंत ए रिवोक करि परिबो ओके काहे कि ना कंप्लीट हो जेतेबेले बी पाखरे पहुंचिची सणु ए जदी बी पाखरे से प्रपोजल ला पहुंचबा आगु जदी से रिवोकेशन पठे दोची then it can be revoked once it reaches then proposal cannot be revoked so the acceptance टा रिवोक करि परिबो किए बी रिवोक करि परिबो किंतु acceptance रिवोक करिया पई हेले केतेबेले रिवोक करिया को पड़िबो बी भी कर परिबो ए भी कर परिबो acceptance भी ए भी कर परिबो बी भी कर परिबो सो भाबंतु बी ए अगेंस्ट रे acceptance केतेले कंप्लीट हला कहितली जेतेबेले ये पठेला ए अगेंस्ट रे कंप्लीट हला तनु ये पठेबा आगुरु ए जे चाहिबो से एक्सेप्टेंस टाको रिवोक कर देई पारिबो किंतु जदी बी अगेंस्ट रे कंप्लीट केतेला हो जेतेबेले ए पाखरे पहुंचीबो तेनु से सेठी रिवोक कर परिबो केतेबेले जेतेबेले त न पहुंचीची ए पाखरे ता भितरे भी से रिवोक करी देई पारिबो ओके सो दिस इज व्हाट आर कांसेप्ट ऑफ communication acceptance offer communication of offer then revocation of offer all of that is okay yes then I would revocation of acceptance केतले आपण रिवोक कर दे परिबे कहली जदी letter of revocation of acceptance received on 9 January by offerer A and letter of revocation of acceptance dispatch करथला 8 January रे पहुंचला 9 January रे ताले acceptance is revoked and not binding काहे कि ना से 10th January रे कंप्लीट हे दांता 10th January रे कंप्लीट हे दांता हम कहितली हम पढथिले सेतरे 10th January रे कंप्लीट हे दांता बट 9 January रे पहुंच गला and then the revocation of acceptance is complete again if you see this illustration at home you'll be able to make yourself clear about this but जदी
सेई लेटरटा जदी 11 जनवरी पहुंचिला ताहले आ एक्सेप्टेंस रिवोक हे परिबो नाही कोन पई 10 जनवरी पहुंच जाइथिला आउ सेठी ऑलरेडी एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट बोथ सेति पई बाइंडिंग आउ आपण सेठी आउ ताकू रिवोक करि परिबे नाही आउ ताकू रिवोक करि परिबे नाही ओके सो एटा हैला आपन को कहली जे कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट केते बेले when it is put in the course of transmission आउ against acceptor when it comes to the knowledge of the proposal acceptance सब बेले either absolute and unqualified होबा का दरकार or by performing a condition or receiving consideration होबा दरकार accept essentials of valid acceptance कोन जे सेटा ऑफरर को आपण कम्युनिकेट करिवे absolute and unconditional करिवे given in prescribed mode to be given till offer exists to be given after offer once offer rejected now no acceptance only the offer to renewed acceptance can be given but जदि once the offer reject हे गला ताहले आउ आपण ताको एक्सेप्ट करि परिबे नाही ओके नाउ रिवोकेशन केमती हुए सेडा तला सेक्शन 6 रे रिवोकेशन केमती हुए आइदर आपण गोटे नोटिस ऑफ रिवोकेशन देकी रिवोक करि परिबे लैप्स ऑफ टाइम जदि फिक्स हेतिला जे एतिक दिन भितर आपण को एक्सेप्ट करियार अछि बट दैट टाइम elapsed and you did not accept ताहले भी रिवोकेशन हे जाय ओके गोटे कंडीशन फिक्स करा हेतिला प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस को हेतिला जे मते एटा को तू दबा आगुरु एटलीस्ट मते थरे you will have to give me a earned money is what earned money कोन की कहबो advance money okay next by death or insanity of proposer जदि death हे जाउची किबा insanity हे जाउची proposer रो ताहले भी revocation हे जिवो okay next capacity of parties एबे आसीबा हमें capacity of parties major हवा दरकार गोटे essential minor ले हे परिबो की हे परिबो नाही sound mind हेतिया दरकार unsound ले हे परिबो की ना हे परिबो नाही not disqualified by law हवा दरकार माने alien enemy convict insolvent एंता किछि अछि जोडा कि आपन को कहि परिबे not disqualified not qualified by law सेडा होची आपनकर disqualified जदि हबो ताले भी हे परिबो नाही जदि एसबु द्वारा हबो ताले से एग्रीमेंट ही void because it is void agreement that means void ab initio because agreement ही हेनी void ab initio माने agreement ही हेनी okay now consideration कोन 2D रे देला when at the desire of the promiser the promisee or any other person promiser कोन कला गोटे जिंस डिजायर कला he desired something and at the desire of him the promisee कोन करूची he is doing something or abstaining from doing something okay or has done something or has abstained तामाने past रे भी कि present रे भी or fifth to do something or promises to do something or promises to abstain from doing something तामाने एठी future एठी आपनर present एठी आपनकर past एठी तीनटा केस रे जदि promiser किछि desire करूची and promisee or any other person for that desire at that desire has done or abstained from doing something does or abstains from doing something and promises to do or abstain from doing something then in that case that becomes a consideration whether that needs to be adequate no need not be adequate मु आपन को मोर प्रॉपर्टी टंकाटर देबी 10 टका देबी 10 टका देबी दैट इज अप टू मी नोबडी कैन टेल मी एनीथिंग जेंति हम पढथिले कोन प्लेंट सिविल सूट सीपीसी रे पढथिले डोमिनस लेटस प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ द सूट नाउ कमिंग टू एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन कोन एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन फर्स्ट होची टू बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर टू बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू जाको हमें किछि भी टिके वैल्यू रो बट टंकाटे भी हो जते भी रो बट सम वैल्यू हवा दरकार एडिक्वेट हवा दरकार नहीं एडिक्वेट हवार रिक्वायरमेंट लॉ हिसाब रे नहीं
Next, lawful consideration कौन? Something for something. Something for something ताकू हमें कहू lawful consideration जाकू quid pro quo भी कुआ जाए. Quid pro quo भी कुआ जाए. And lawful object कौन? जे आपनकर ultimate goal or aim टा तारा से जो contract रो, that is the object of object, and that must be lawful as well. Consideration भी lawful हवा दरकार and object भी lawful हवा दरकार. And it should not be what? It should not be forbidden by law. Okay, defeat the provisions of law. It must not be fraudulent. It must not imply injury to person or property of another, or it must not be oral or opposed to public policy consideration. एसबु हबा कथा नुह बोली कहला किए सेक्शन 23. माने मु कहबी काकू जा मु आपन कहितली गैम्बलिंग करिया पई मु का सहित कहूची, प्रोस्टिट्यूशन पई का सहित कहूची. Okay, I am asking ki you will leave your husband, then I will give this property. फ्रॉड करिया पे तो कहूची. ओके, काकू गोटे तुम काकू मर्डर कर दे, then I'll give a property. Okay, all of these, it should not be, it cannot be consideration, it cannot be lawful consideration according to section 23. Next, voidable contracts and void agreements. कौन कहला जे what agreements are contracts? Agreements are contracts केतेबेले जेतेबेले फ्री कंसेंट रे हेतिबो, कॉम्पिटेंट पार्टीज हेतिबो, लॉफुल कंसिडरेशन हेतिबो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हेतिबो, एंड एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void. ताहले ए सबु जाक जदी हबो ताहले हमें ताकू कहबा कोन? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड किए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ओके, तेणु एगुडा होची these are the contract. आ गोटे इनसाइट कहबा छाड़ देथिली, एटा बे मन रखितंदु जे जे अनसाउंड माइंड, सपोज गोटे लोक अनसाउंड अछि, he is usually unsound. ए लिखाई देखंतु, usually unsound but occasionally sound. माने से सब बेले प्राय पागल थाए, but मझरे मझरे he is sound. Then during that soundness he may enter into a contract and that may be valid. And से सब बेले sound थाए, मझरे मझरे unsound थाए, then during that soundness also he may make a contract. That's not an issue. He may make contract. So जेतेबेले relevant period रे से sound अछि ना नहीं, that has to be seen. Okay, whether he is completely insane, that is not the catch here. Whether relevant period रे से sound अछि ना नहीं, that is to be checked. Okay, consent kono? Two or more persons are said to consent when they agree upon same thing in same sense. ହେଲା, केतेबेले गोटे एक दूसरे सहित कंसेंट कले बोली धरा जीवो जेतेबेले से माने एग्री करचंती अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस. अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस. ए बी को कहिची जे मु मते तो मु तते तोर ऑडिट मो ऑडिटा तते बिकिबी. बी भाबुची कोन? हां, जो ऑडी हमरो 4 रिंग वाला ऑडी सेटा दबो, किंतु ए तार मारुति 800 को ऑडी डाके आ सेटा को से बिकिया को चाहूची. So whether they are consenting on the same thing in same sense? No, that's not a consent. Consent होवा पई जेतेबेले सेम जिंस को समान सेम सेंस रे एग्री करूचंती, that's a consent. अब फ्री कंसेंट होवा पई ए पांचटा जिंस एब्सेंस होवा दरकार. सेक्शन 15 हिसाब रे कोerशन नथिया दरकार, अनड्यू इन्फ्लुएंस नथिया दरकार 16 हिसाब रे, फ्रॉड हवा न हवा दरकार 17 हिसाब रे, मिसरिप्रेजेंटेशन न हवा दरकार अंडर 18, एंड मिस्टेक न हवा दरकार अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22. ताहले ताकू फ्री कंसेंट कही पारिबा. ओके, मन रखंतु फ्री कंसेंट रे जेतेबेले न थाए सेतेबेले आपण ताकू voidable करी पारिबे. voidable आपण करी पारिबे जेतेबेले ताकू आपण से voidable को आपण जदी चाहिबे you can make it void, but जदी ताकू कहबे जे नाही मु एक्सेप्ट कर दोची, जदी एटा को मु कैंसिल करिया को चाहूची ताले एटा void हे जिवो, but जदी एक्सेप्ट करिया को चाहूची then in that can be valid also. That can be valid also. Okay, coercion कोन? जेतेबेले threat to commit any act forbidden by IPC सेटा को coercion कहबा. Unlawful detention of property to cause injury to a person, that is a coercion.
or to cause person to enter into an agreement by because आपण ଗୋଟେ unlawful detain କରି କରୁଛନ୍ତି, that is also coercion. Undue influence କଣ, ଗୋଟେ ଲୋକ dominant position ରେ ଅଛି and he holds apparent authority or real authority and he stands in fiduciary relationship, ସେ ଯଦି contract ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ କରୁଛି whose mental capacity is affected by illness, age or diseases, then that case ଆପଣ undue influence କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରିବେ, fraud କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ. Okay, now fraud କଣ, ଆପଣ କିଛି ଯଦି suggest କରୁଛନ୍ତି which is not true, active in concealment, କିଛି ଗୋଟେ ପୁରା actively conceal କରୁଛନ୍ତି. Now promise made without intention to perform it, ଆପଣ ଗୋଟେ promise କରିଛନ୍ତି without having an intention to performing it. Now act fitted to deceive, act କଣ ପାଇଁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, just that you can deceive a person, or act or omission which law declares as fraudulent, ଯଦି law ତାକୁ fraudulent ବୋଲି declare କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ fraud ହୁଏ. ଆଚ୍ଛା, silence, does it amount to fraud? Silence normally does not amount to fraud unless there is a duty to speak, unless there is a duty to speak. ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, A B କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ବିକୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଖାଲୁଆ ହେଇକି ଜମିଟା ଅଛି, ଖାଲୁଆ ହେଇକି ଜମିଟା ଅଲରେଡି ଅଛି. ନା ଏ ସେଠି କିଛି କହିଲାନି, ବି ତାକୁ ଆସିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆଉ ନେଇଗଲା. ପରେ ସେ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ, ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲା ମାନେ ସେଠି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି. Okay, now B says, why were you silent, why did you not say something? So you have committed fraud. What do you think, whether he has committed any fraud? Yes or no? No, sir, because that's already visible from the. Yes. So he does not have a duty to speak. He does not have a duty to speak. But a gote घोड़ा बिकुची जार आस्थमा अछि. So घोड़ा गोटे किलोमीटर पर्यंत बढ़िया दौड़िबो, तापरे धकेइबो खाली हैला. So now this is a what, this is not a patent defect. Patent defect और latent defect दिटा रु हमें जानिबा. Patent माने it is visible, latent माने लुचि के अछि, it is not visible. So this kind of latent defects, when there is, there is a duty to speak, and he has to tell that, he has to inform that. So jodi seti duty to speak achi and he is not saying, then silence may amount to fraud, otherwise silence may not amount to fraud. Now misrepresentation, positive of assertion which is not true and person making it believes to be true. जदि सत्य नुह किंतु मु आपण ताकू सत्य बोली कहिकी आपण करूचंती, and breach of duty without intention to deceive and causing mistake innocently, ए सबुरे हैला misrepresentation. एठी आपणकर कोन, एठी मे बी आपण फ्रॉड करनांती बट ताकू गोटे रिप्रेजेंटेशन ता भूल रही जायछि because you also believed it to be true. Okay, you also believe it to be true. सेठी भी आपणकर सेठी voidable हेई पारिबो, यू voidable हेई पारिबो. सेंदी मिस्टेक कोन, मिस्टेक रे पुनी दीटा जिंस आपण देखिया पड़िबो, whether it is of fact or of law. जदि ऑफ लॉ अछि ताले इंडियन लॉ रो जदि थिबो ताले वैलिड हबो, फॉरेन लॉ रो जदि थिबो ताले हम देखिबा हेडा यूनिलैटरल मिस्टेक और बायलैटरल मिस्टेक. जदि यूनिलैटरल मिस्टेक थिबो माने गोटे पार्टी द्वारा मिस्टेक हेतिबो, देन सेटा वैलिड रहइबो, और जदि बायलैटरल थिबो देन सेटा वॉइड रहइबो. किनु मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपण डायरेक्टली चेक करियो सेटा यूनिलैटरल और बायलैटरल. जदि यूनिलैटरल ताले वैलिड, बायलैटरल जदि वॉइड. बायलैटरल माने जदि ए मिस्टेक बाय बोथ द पार्टीज, यूनिलैटरल माने मिस्टेक बाय वन पार्टी ओनली. ओके, सेठी ऑफ फैक्ट हेले यूनिलैटरल हेले वैलिड, बायलैटरल हेले वॉइड. ऑफ लॉ हेले आपण चेक करिवे इंडियन लॉ रो ना फॉरेन लॉ रो. इंडियन लॉ रो मिस्टेक जदि देन वैलिड बिकॉज ignorance of law is not an excuse, so एटा वैलिड रहबो. किंतु जदि फॉरेन लॉ रो ताहेले जदि यूनिलैटरल मिस्टेक ताहेले सेटा आपण कर रहबो वैलिड, कि जदि बायलैटरल मिस्टेक then only it will be void, then only it would be void. Okay, yes, AD mistake of fact by both party, bilateral hele void, by one party unilateral hele valid. Law ro jodi Indian law ro hela valid, ki jodi foreign law ro hela tale same effect as mistake of fact. That means by both the parties, that is bilateral hele
bilateral हेले void and one party हेले unilateral हेले कौन unilateral हेले valid unilateral हेले valid. Okay, now void agreements. Okay, कौन कहला void agreements? Agreement by incompetent person, that is a first a void agreement. किसी एक्सेप्शन अच्छी कि हाँ आपण नॉर्मली पढ़ते माइनर सहित तो करि परिबे नहीं, बट माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्ट. कॉन्ट्रैक्ट रे जदि किछि बेनिफिट आपण माइनर को दबाक चाहउछंती, दैट यू मे गिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर इज वैलिड. व्हाट इज द लीडिंग केस अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद द माइनर कि कहि परिबो? Mori BB versus Dama. यस, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष. Okay, so now if both the parties are under mistake of fact, then that's also a void agreement. Now if there is an unlawful consideration or object, section 23 कहला ताले भी आपनकर सेटा गोटे void agreement. Okay, next, agreement without consideration. Section 25 कहूची agreement without consideration is what? Is void agreement. But जदि promise in writing due to natural love and affection, then that is fine. So natural love and affection can be a consideration, can be something in lieu of consideration. मु ताकू love and affection पाई दोची. को transaction रे love and affection consideration थाए? Sale रे, lease रे, कोथरे थाए? Gift, yes. Yes. Now compensation for past voluntary act. से मु दादा परदादांकर भलो सेवा करथिला, सेति पई मु past voluntary act पई एबे ताकू compensation दबाकू चाहूची. That can be a good consideration also, no issues. Now promise to pay part time time barred debt. Promise to pay part time barred debt, that can be also a valid agreement. केते बेले भाबंतु A B ठू 10 लाख टका नैथिला, बट मनी सूट रिकवरी पई केते वर्ष भितर करिया पड़े, 3 इयर्स भितर करिया पड़े. हमें लिमिटेशन एक्ट रे पढिचे. सो 3 इयर्स भितर आपन करिया पड़े. Now 3 years भितर जदि न कला, then that debt becomes time barred. Now he has no remedy to recover it. He has no remedy in the law to recover it. So that's a time barred debt. But B कहला छाड़, मु तो से जो पैसाटा नेइथिली 10 वर्ष तळे, से 10 लाख टका मु तते देबी, किंतु तू मोर ए कामटा कर दे. So whether that is a consideration, yes, that can be a consideration also. Now agreement in restraint of marriage, that's also a void agreement by section 26. Agreement in restraint of trade, yes, that's also a void agreement, but तार किछि exception अछि. गोटे होछि business of which goodwill is sold. यदि आपण goodwill सेल करचंती, yes, that can be done. That can be done. जेतले मु कहिबी गोटे पार्टी Walmart एबे Flipkart को acquire कला, तो Flipkart रो goodwill किनला, तो सेते बेले कहि पारे Walmart जे Flipkart को तू independently एमति किछि सेल करि परिबो नाही without my affiliation. It can be done. Okay, so agreement in restraint of trade is void, but जेतले goodwill सेल कराउची सेतेले it is not void. Now agreement in restraint of legal proceeding न करि परिबो सेटा भी void, but तार भी exception अछि. जेतले मु कहूची जे arbitration को रेफर करिया, so सेटा कोन void? No, कहि परिबे arbitration को रेफर करिया, कारण arbitration is also like a legal proceeding, or contract to refer questions that have already arisen, or guarantee agreement of a bank or a financial institution. ये सब जाक होची agreement in restraint of legal proceeding रो exception. Okay, next, agreement having uncertainty. यदि uncertainty अछि agreement रे ताले void. अच्छा, wagering agreement वो पढिबा हमें. wagering agreements, those are also void, but horse racing by certain prices, those are an exception. Now agreement contingent on impossible event, that is also void. An agreement to do impossible act, that is also void as per section 56. And reciprocal promise to do things legal and also other things illegal, ताले that is also void बोली हमें देखिबा. सेक्शन नंबर सहित लिखा है, you remember it, कोडा कोडा रे कोटा void अछि आ कहारो कोन किछि exception अछि की. Okay, now coming to contingent contracts. Contingent contracts कोन? Contingent contract is a contract to do or not to do if some event happens or if some event does not happen. अब मु तते घरटा बिकिबी जदी
जदि दिल्ली रु आसुथबा फ्लाइट टा जदि आज वर्षा हला सो दैट्स ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ इट मे हैपन इट मे नॉट हैपन जदि दिल्ली रु आसथिबा विस्तार फ्लाइट टा 10:30 भितर लैंड कला then only I will give you $100. That's a contingent contract. That's a contingent contract because you are promising that you will do something or not to do something if something happens or if something does not happen. Okay, so if it is for happening, section 31 eta कहला 32 रे कहला if the contract is for happening of uncertain future event then जेतले से इवेंट हे जाय सेतले वैलिड हुए आ जेतले से इवेंट हैपनिंग टा इम्पॉसिबल हे जाय सेतले सेटा void हे जाय. Similarly, if the contract is for non happening of certain future event, if that event happens then it void हे जाय. If that happening of event becomes impossible then it valid हे जाय. आर एग्जांपल कोन happening of certain future event मु कहली जे ए कहला जे मु तते 100 टका देबी केते बेले जदि आजी वर्षा हबो जदि एटा वर्षा हबो ताले वर्षा हे गला if it rains रेन स्टार्ट हैला ताले वैलिड हे गला जेतेबेले राती हे गला दिन पळेला बट वर्षा हेलानी ताले that becomes impossible anymore then सेटा void हे गला. ओके सेमती नॉन हैपनिंग ऑफ सडन इवेंट मु कहली जदि बोइंग 747 does not land by 10:30 then I will give you my pen. मु पेन देबी केतेले जदि बोइंग 747 जोटा आसुची दिल्ली रु that does not land by 10:30. ओके जदि से 10:30 भितरे पहुंची गला then void हे गला ऑर्डर. बट जदि 10:30 आगुरु सपोज 10:30 आगुरु पहुंची गला then the happening of this event that it should not reach by 10:30 that becomes impossible so that is valid. So 32 33 रे एक कथा कहला. Okay, now what is the time for contingent contract? Contingent contract रे जदि time specify करा जाय नहीं an event becomes impossible because person does something which renders it impossible then that's a void contract. That's a void contract माने एटा हमर टीपीआर भी ए रूल गुडा पढिथिबा जदि मने थिबा आपनकर टीपीआर भी ए रूल गुडा में पढिथिले मने अछि एनीवन. Yes, sir. Contingent Yes, sir. Yes. So जदि आपण मु टाइम स्पेसिफाई करिनी कोन करची मु कहली एक को कहली जदि तू लंडन जिबू ताहेले मु तते देबी आ सेठी किछि टाइम स्पेसिफाई करिनी लंडन जदि जिबू ताहेले मु तते प्रॉपर्टी टा देबी. नाउ लंडन जिबू बोली कहली बट मु कोन कहली आई एम रेंडरिंग इट इम्पॉसिबल. व्हाई हाउ मु कोन करछु ता पासपोर्ट टा जळे दोछि और पासपोर्ट टा लुचे दोछि ताहेले I am rendering it impossible so that's a void contract. और यदि टाइम टा स्पेसिफाई हेची ताहेले पुनी तारा दी प्रकार देला. यदि टाइम is specified for happening of an event if event do not happen within time then void contract, and the time is specified for non happening of the event and the event do not happen within this time then that's a valid contract. Okay, सरला agreement contingent on impossible event are void. जदि मु कहबी जे if you run 200 miles an hour that's an impossible event. 200 miles रे मु केम किए दौड़ी परियो नै so that's a void altogether. Okay, now performance of contract को contract should perform हवा दरकार 37 to 39 रे देला. Contracts which did not be performed 62 to 67 रे देला. Okay, so the by whom, when and where, how to perform, how to appropriate payment ये सब देला ये रे एठी सेंती quasi contract and breach of contract भी देला 68 to 72 and 73 to 75 रे. पढिबा contracts which must not be performed कोन कहला obligation of parties to contracts in case of death by जदी गोटे parties to the contract अछंती A और B दिटा parties अछंती. Now जदी गोटे माने contract करछंती आ A मरि गला ताले legal representative भी duty अछि जे से he will perform the contract unless this contract performance depends upon the personal qualification or skill. यदि personal qualification or skill ऊपर depend करूची
ताहले सेठी ता लीगल एयर करि परिबो नाही नहेले ही कैन डू इट इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल अपन टिके देखि देबे इट्स नॉट इंपोर्टेंट फेते इंपोर्टेंट नाही ओके नाउ जॉइंट परफॉर्मेंस 42 कोन कहला जदी all persons during their lives and LR on their death must fulfill तो जदी भाबंतु ए आ बी मिसी की कोटरे कॉन्ट्रैक्ट करछथि सी सहित ताले ए बी मिसी की करिया दरकार जॉइंट परफॉर्मेंस करिया दरकार आउ तांको परे तांको एलआर भी ताको परफॉर्म करिवा दरकार सेमति राइट्स कोड ऑल पर्सन्स ड्यूरिंग देयर लाइफ एंड एलआर ऑन देयर डेथ हैज राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस एलआर भी परफॉर्मेंस मागी परिबो नले एलआर को परफॉर्म करिवा को भी पड़ी पारे सो बोथ वे must fulfill and they have a right to claim performance as well okay performance of promise by joint promisors any joint promisor may be compelled to perform each joint promisor may compel other joint promisor to contribute equally एठी हमरो जेंति टॉट रे आपण कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पढथिले इट इज लाइक दैट सेठी आपण यदि जॉइंट परफॉर्मेंस अछि बहुत गुडे मल्टीपल पर्सन्स अछंती ताले समस्तनको ठु काहाटु भी आपण परफॉर्मेंस डिमांड करि परिबे and किए भी परफॉर्मेंस डिमांड करि परिबो now if one promiser has performed it then say अलगा लोक मान अलगा joint promiser मान कहि परिबो जे you contribute equally to that okay and joint promiser must bear loss in equal share जदि किछि लॉस भी होबो ताले भी समाने equally they will bear the loss an effect of release of one joint promiser by promisee do not discharge the other joint promisers तामाने a b c तीनटा पर्सन्स थिले नाउ ସେମାନେ d ସହିତ କରିଥିଲେ d କୋची मो एक c को रिलीज कर दिले लायबिलिटी रु नाउ ही डज नॉट हैव टू परफॉर्म स्टिल देन a b विल बी लायबल डज नॉट मीन दैट आपण आपे आपे डिस्चार्ज हे गले सेटा सेक्शन 44 रे कहला नाउ टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस कोन कहला जदी 46 रे कहला इफ टाइम इज time when no application is made by the promisee and no time is specified by the promisee application भी देइनी आ टाइम भी स्पेसिफाई करी नाही ताले सेटा आपनकर केमिति हबो रीजनेबल टाइम रे हबो आ जदी 49 रे कला जदी नो टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द promisee ताले ड्यूटी ऑफ promiser टू अप्लाई टू द promisee टू अपॉइंट रीजनेबल प्लेस फॉर परफॉर्मेंस को जागा रे करबो सेठी गोटे ड्यूटी अछि टू अप्लाई आउ when without application by the promiser has undertaken to perform ताले टाइम होची यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस प्लेस होची at which promise ought to be performed or if promiser has not undertaken to perform then duty of promisee to apply to promiser to for performance at time within usual hours of business and place hoची proper place केमती करिवो in the manner and time as promisee prescribes promisee जेमती prescribe करिवो सही manner रे करिवो we just go through this 46 through 50 is the time and place for performance now performance of reciprocal promises कोन कहला promiser is not bound to perform unless reciprocal promisee is ready and willing reciprocal promisee जे ताकू promisee करची सी जदी ready and willing नाही ता पार्ट करिया पई ताले promiser is not bound to perform a b को घर सेतले ही दबो जेतेले b ताकू 5 लाख टका दबो सी जदी 5 लाख टका दबाकू रेडी नाही ताले मु कहीं ताकू घरटा देबी ओके order of performance of reciprocal promise कोन कहला express जदी हेतिबो ताले according to order implied हेतिबो according to nature of transaction केमिति से nature of transaction सेमिति करा जिवो okay now liability of party preventing event on which contract is to take effect then contract कोन voidable और compensation not that important 53 54 खाली जानि थांतु देखि देबे थरे ओके बहुत दिन सो छै बुझिया पे नेक्स्ट इज यस इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इन फिक्स टाइम जोठी टाइम ता आपनकर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थिबो सेते बेले आपनको टाइम भितरे करिया को पड़िबो जदि टाइम भितरे न कले देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल दैट मींस प्रॉमिस जदि चाहिबो ताले एक्सेप्ट करि परिबो आउ ता पई से कंपनसेशन भी मागी परिबो किंतु जदि टाइम ता एसेंस नाही कॉन्ट्रैक्ट रो माने मु किछि टाइम स्पेसिफाई करनी जे टाइम भितरे न कले चलिबो मु कहूची भाबंतु मोर ओडे रिसेप्शन अछि ए बी को कहिछि मोर रिसेप्शन रे आसी कि तू मंडप लगेबू तल मते रिसेप्शन दिन लगया दरकार ना रिसेप्शन पर दिन लगेले थोड़े हबो सो जदि टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
देन जदि से ता परे आसुची 5 तारिख दिन 4 तारिख दिन रिसेप्शन से आसी 5 तारिख दिन लगे पे ताले ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस सेठी कहि पारे जदि ठीक अछि तू लगा मु 5th रे आउथरे करिवि ताले चलिबो नोबडी ऑफ कोर्स विल डू दैट जदि से करूनी ताले सेटा वॉइडेबल माने से जेते भी चाहिबो वॉइड करि परिबो बट द टाइम एसेंस नाही कहि जे तू मते दबु घरटा केबे दबु तो कहिनी ताले सेठी वैलिड हबो किंतु जदि बेसी अननेसेसरी डिले करूची ता पई कंपेंसेशन मागी परिबो किंतु ताकू वॉइड करि परिबे नाही ओके जदि आपण टाइम इज एसेंस ता धरे आपण को प्रॉमिस पाखरे ऑप्शन अछि जे से ताकू एक्सेप्ट करि पारिबो कि चाहिले वॉइड भी डिक्लेयर करि पारिबो बिकॉज़ इट इज वॉइडेबल दिस इज इंपोर्टेंट 55 ओके नेक्स्ट एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट आकू कहा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जेतले मु गोटे इम्पॉसिबल एक्ट करिया पे कहूची दैट्स ए वॉइड एग्रीमेंट एंड if contract afterwards become impossible and unlawful then that's a void contract ता माने impossible act को करिवा को कोंती डायरेक्टली जदि मु impossible act करिया को ही कहूची जेंति कहली 200 miles an hour दौड़ एटा होची impossible act करिवा that's a void agreement but agreement कला सेटा वैलिड थिला पर impossible हेला जेंति कुकुर मु बिकी बोली कहितली बट कुकुर कोन गला मरि गला then this became impossible now so that's a void contract okay and if promiser knows about the act becoming impossible or unlawful but promisee does not know it promiser जानिची जे जे ता कुकुर मरि गलानी किंतु promisee जानिनी ताले promiser must make compensation to promisee ताले promisee को compensation दबा को पड़िबो ओके बोली कहला 56 रे yes now reciprocal promise to do एठी आपण होची कोन आपण पकेबे कोन blue pencil rule this is blue pencil rule you will apply blue pencil rule कोन जेतले गोटे कॉन्ट्रैक्ट थाए आपण कहि दोची गोटे कॉन्ट्रैक्ट थाए जार गोटे पार्ट लीगल आ गोटे पार्ट लीगल जिनसटा कहूची ता सतो इलीगल जिनसटा कहूची मो छुआ को पढेबो प्लस मते ड्रग सप्लाई करियो so this part is legal this part is illegal so one thing legal sei part ta ko valid another thing illegal sei part ta hoji void sei part ta hoji void so but seti आपन को एति की दरकार that it must be separable from each other both must be separable from each other okay one thing is legal and another thing is illegal and they must be separable from each other then आपन blue pencil rule apply करकी you will separate them and the part which is legal is a valid contract the part which is illegal is a void agreement next alternative promise करूची जोटी की choice दउची आ कहूची जे गोटे जिनसर breach जोटा की legal आ another breach is illegal आ that is alone enforceable then ताकू valid कहबा but जदी alone not enforceable then ताकू void कहबा बोली कहला 58 रे संदि appropriation of payment एठी आपनकर गोटे क्लेटन्स रूल अछि दिस इज इंपोर्टेंट क्लेटन्स रूल कोन जे आपण जो थरे डेट पेमेंट करंती डेट रो पेमेंट क्रेडिटर्स को भीतर जेमति करा जाय दैट इज डन अकॉर्डिंग टू द क्लेटन्स रूल क्लेटन्स रूल्स जदी कोन ताले आपण जानिबे जे द रूल व्हिच गवर्न्स द पेमेंट ऑफ डेट by persons by debtor is governed by Clayton's rule okay so एठी 59 रे कहला application of payment where debt to be discharged is indicated by debtor जदी इंडिकेट कर देछि नाही एमिति तू डेट ता पेमेंट कर ताले पेमेंट ता केमति दिहाबो पेमेंट must be applied to the discharge of the debt accordingly किन जदी debt to be discharged is not indicated mention हेनी केमति करा हबो ताले creditor may at his discretion apply payment to any pending debt or any lawful pending debt ku se apply kari paribo an application of payment where neither party appropriates then in order of time आपण करिवे आपण देखिबे एते डिटेली ताकू जाई हबो नाही because it will take time okay now contract which need not be performed
को कॉन्ट्रैक्ट गुडा परफॉर्म करिबा दरकार नाही नोवेशन जदी हे जाईची जदी ताकू रिन्यू कर देचंती चेंज कर देचंती नोवेशन रेसिशन कर देचंती रेसिशन हमें कोथरे पड़थिले एसआरए रे अछि रेसिशन कर देचंती और आपण अल्टरेशन कर देचंती ताहाले ताकू ओरिजिनल नीड नॉट बी परफॉर्म सेठिया ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ता परफॉर्म करिबा दरकार नै अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 ना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 जदी डिस्पेंस हे जाईची और डिस्चार्ज हे जाईची रेमिशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हे जाईची एक्सटेंड कर देचंती टाइम परफॉर्मेंस पई और एक्सेप्ट कर देचंती एनी अदर सैटिस्फैक्शन देन प्रॉमिस ही जदी चाहिबो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म न करिकी ए सबु करि परिबो एंड दैट विल आल्सो बी फाइन सो एई सबु केस रे आपण परफॉर्म करबा दरकार नै 62 63 रे कहला एंड द consequence कोन कहला 64 रे रेसिशन ऑफ voidable कॉन्ट्रैक्ट रो consequence होची अदर पार्टी डिड नॉट परफॉर्म इट यदि voidable कॉन्ट्रैक्ट थिला औ मु रेसिशन कर देली देन अदर पार्टी डिड नॉट परफॉर्म इट बट if it is a void agreement and it's a or a void contract and if the other party received any benefit then taku apono benefit taku restore karibe plus compensation भी देबे to the person from whom benefits were received that is the consequence of जदि आपण परफॉर्म करू नाहंती आ मोड ऑफ कम्युनिकेशन और रेसिशन ऑफ voidable contract केमिति आपण जेमिति प्रपोजल को कम्युनिकेट किमा रिवोक करथिले सेमति when promisee refuses or neglects to provide reasonable facility to promisor for performance, then promisor is excused from non-performance. एडा भी टिके देखिदेबे 66 and 67. Next, certain relations resembling those created by contract. जाकू कुआ जाए quasi contract जतले contract type रो नुह किंतु contract भलिया resemble करूची सबुटु बड़ एग्जांपल होची फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ए रास्ता रे चल चल जाउथला देखला गोटे पर्स टे पडिची पाइला नाउ whether he has any liability yes he has a liability to return to the rightful owner how धरा जीवो as if he is just a belly हमें बेलर बेली कांसेप्ट पडिबा he is just a belly माने से रखिची as on behalf of B and he must return it on B on payment of due charge यदि तार किछि चार्ज एक्सपेंस हेतिबो ताले ते चार्ज रो खर्च देला परे से ताकू he has to return it बोली that's a सेठी कोन होची गोटे कॉन्ट्रैक्ट एज सच करि नथिले ए और बी किछि कॉन्ट्रैक्ट करथिले कि पर्स रखिया पे नो बट बी रो पड़ी जायथिला और ए पाइला सो नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एज सच बट सेठी कोन हेची जे बिकॉज़ A has found a purse, there is a relationship in the nature of the contract. Okay, so taku kuajae quasi contract. Kon कहला yes necessary supplied to person incapable to contract entitled for reimbursement from his property. गोटे माइनर ते अछि जे कि incapable now of a contract. मु कोन करछि ताकू नेसेसरी सप्लाई करछि तारो ताकू रक्षण बखण पय ताकू देछि पैसा ता पढा पढी पय पैसा देछि ना से बड होला परे to reimburse kari paribi ki yes I can reimburse it. Next, reimbursement to person paying money which is due by another having interest in payment of money is entitled for reimbursement. A B to got a loan neithila now he is not able to pay it. C go karuchi B behalf A behalf re pay kar duchi now C can recover it from A. Okay, that is 69 radala. Then obligation of person enjoying benefits of non-gratuitous act. If a person lawfully does anything for the other person or delivers anything to him without intention of doing it gratuitously and other person enjoys benefit, then other is bound to pay compensation and restore thing. एठी कोन होजी A B पई किछि जिंस पठौजी B कोन गुड आपण गोटे होटल आपण घर पाखे रहछि सब दिन आसी ना नाउ चिकन डेली दारण को देई जाउची आपण रखुचंती आपण कोन सांग से जे आपण खालटा दउची आपण जतले डेली ताकू खाउचंती and he has no intention to do it gratuitously then in that case later on आपण को सेटा तारो पैसाटा दबा को पड़िबो you have to give compensation for it. Then the 71 असला कोन responsibility of finder of lost goods एथरे same as belly तारो सेया कैपेसिटी सेया लायबिलिटी रहिबो म आपण को ऑलरेडी बुझाई दिली तापर liability of person to whom money is paid or things are delivered by mistake or coercion
then person must repay or return. जदि मु मिस्टेक रे आउ काकू डेलीवर कर देछि ताले आपनको भी रिटर्न करिया पड़िबो। भाबंतु ए गोटे मगैथिला कोन मिंत्रा रु पार्सल मगैथिला। ए सब थिबे जो माने जे पिला खाली मिंत्रा और नायका को पोस्तुबे लाइक माय वाइफ। सो मिंत्रा रु गोटे जिनस मगैथिला से कोन कला ना आपन को फ्लैट रे न देकी फ्लैट नंबर 206 रे न देकी दे देला 207 रे। से 207 वाला रखी देला। Now whether he has a duty to return it to no you not, yes he has a duty to return it. Okay, काहेकि ना by mistake it is delivered, so he has a duty to return it. से कहबोनी जे मते तो दियाला एटा मु रख देबी नो। Okay, so 72 says that. Next, consequence of breach of contract. Consequence of breach of contract जदी गोटे breach of contract ହେଲା ताले कोन तारो consequence compensation for loss or damage caused by the breach of contract. Compensation दिया हबो for the loss or cause damage that is caused by the breach of contract. Okay, जोटा कि naturally arise करछि from the usual course ताले ताकू ordinary loss कहबा, and which parties knew is likely to result from such breach, then that is probable loss. दिलेंस कहला ordinary loss or probable loss. naturally जदी arise करछि से loss ता natural loss, जदी आपण parties जानि चंदी जे हां हेमतिया loss हेई पारे, that's a probable loss. Okay, compensation आपण देई परिबे नाही रिमोट लॉस पाई जो आपण सही कांसेप्ट रिमोटनेस ऑफ डैमेज रो कांसेप्ट, और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज ता पाई भी देई परिबे नाही, और सफर ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निजे ब्रीच कला बोली सफर कला किछि लॉस ता पाई भी आपण लॉस देई पर डैमेजेस देई परिबे नाही और कंपनसेशन देई परिबे नाही। अदर दिन पाई कंपनसेशन देई परिबे बोली रहला। ओके, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी इज स्टिपुलेटेड। जदि आपण ऑलरेडी पेनल्टी रखिचंती ए बी सहित कॉन्ट्रैक्ट कलाडू कहिछि जदि किए ब्रीच करिवो सिए 5 लाख टका दबो, एमती बोली पेनल्टी स्पेसिफिक कहला। जदि इफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी ताले आपण पे रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग अमाउंट सो मेंशन, ताले आपण सेही ताकू नॉट एक्सीड करिकि रीजनेबल अमाउंट देई परिबे बाय वे ऑफ पेनल्टी। आ जदि कॉन्ट्रैक्ट मेंशन स्टिपुलेशन बाय लिक्विडेटेड डैमेजेस ताले आपण जेमिति कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करूची सेमिति आपण देबे बोली कहला। नेक्स्ट असला पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जदि रिसाइन करूची राइटफुली देन ही इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन एंड फॉर एनी डैमेज सफर्ड बाय हिम ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन रे आपण एसआर रे you will be reading it or we have already read it. Okay, now discharge of contract. contract ता end केमति हुए, discharge माने end केमति हुए कहला। an agreement which was binding on the parties ceases to bind them if the contract is discharged, and contract केतेबेले discharge हुए first असला by performance, दी पार्टी ताको चुपचाप परफॉर्म कर देले सॉरी गला डिस्चार्ज हे गला, और ब्रीच कर देले भी सेटा डिस्चार्ज हे जो मु कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देली ताले भी सेटा सॉरी गला। ब्रीच कोन एक्चुअल डेट जदी करिवो और एंटिसिपेटरी ब्रीच जदी एंटिसिपेटरी ब्रीच कलो ताले भी अब एंटिसिपेटरी ब्रीच केमदिया ए बी को कॉन्ट्रैक्ट करथला जे से ताको बाहाबो, बट से कोन करछि ना नहीं से ताको बाहाबो करिया नहीं से ताको गोटे प्रॉपर्टी बिकिवो, से प्रॉपर्टी आ गोटे काको बिकि सरलानी, देन ऑलरेडी देयर इज अ ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच न कि एंटिसिपेटरी ब्रीच हे गला। नाउ बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट दी जण मिसी की भी करि परंती। नोवेशन माने मु कहितली रिन्यूअल करिया पे रिन्यू जदी करिवे ताले ही गेबो, और रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ता माने मु रिड्यूस कर देबी जे नाइ नाइ ई कॉन्ट्रैक्ट करिया दरकार नै अलगा किछि मु रिड्यूस कर दूची। आगो कहितली 1000 केजी राइस सप्लाई करिया तापर कोछि नाइ नाइ 100 केजी करिया। नेक्स्ट होची रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ता माने कैंसिल करिवो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट असला गोटे इम्पॉसिबिलिटी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जदी डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ ए पार्टी पळे आछि, वन ऑफ द पार्टी डाई देन सॉरी गला, और ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस जदी सर्कमस्टेंसेस चेंज हे गला ताहाले भी सेटा डिस्चार्ज हे जाई पारे। So these are the modes by in which the contract may be discharged. Now remedies for breach of contract, जदि गोटे contract रो breach हला ताले आपण कोन कोन remedies नै परिबे, आपण नै परिबे। फर्स्ट होची suit for injunction, एसआरए रे अछि आपनर कोन परमानेंट इंजंक्शन जोटा कि आपण नै परिबे। suit for special performance, suit for special performance हमर पढतिले भी सेटा भी एसआरए रे जोटी आपण स्पेशल परफॉर्मेंस पई कहि परिबे जे जोटा एग्जैक्टली कहिची सेटा ही एग्जैक्टली कर। सूट अपन क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट कोन के कहि परिबो, व्हाट इज क्वांटम मेरिट एनीवन?
सर जो बेनिफिट रिसीव है तो तार क्वांटिटी सेतिक डिस्ट्रीब्यूट करिया. Yes, yes, and rescission of contract and suit for damages. So rescission भी आपण सही SRA रे करचंती जोथि कि आपण damages भी claim करि परचंती. That is remedies. These are the remedies basically. Okay. Next type of damages. केते प्रकार damages अछि? General damages जेते बेले natural arise करे from the breach of contract, that's a general damage. Special damage जोटा unusual circumstance पई arise करे, that is a special damage. Exemplary damage जदि आपण punishment भलिया दियति जेमति कि आपण भोपाल गैस ट्रेजेडी रे देले, that is an exemplary damage. Now nominal damage कोन? Actual financial loss हेनी किंतु आपण nominal damage आपण को दिया होची, सेटा होची nominal damage just to recognize that right. एटा खाली right को recognize करिया पई right recognition रे दिया जाए ए damage टा. And liquidated damages जोटा कि fixed sum of damages to be paid in such a breach, and unliquidated जोटा not fixed, that means it will be determined by the court. Okay, now these are the general contracts. हमें एबे हमर कर सरी गला तापरे जिबा हमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी उडा तो रिपील हे जाई जोडा कोन सोगा आउ इपा सिकी माने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट सिकी दे हैव रिपील्ड दी अदर चैप्टर्स. नाउ कमिंग टू दी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर indemnity, guarantee, bailment, pledge, agency. So you will understand all these and sections गुडा तो आपण टिके टिके देखिया को ही पड़िबो. Now what is an indemnity? Indemnity कोन? Indemnity रो बेस्ट एग्जांपल होची इंश्योरेंस. सेठी कोन हुए? एक हुए बी को देख जदी तो घरे निया लागिला और तो घर किछि भी लॉस हला, I will give you the compensation of the loss. I will give you the remuneration jaha bhi in order to cover that loss. I will give you that. That is in fact indemnity. कौन कोची? A contract by which one party who is known as the promisor is also known as the indemnifier. He promises to save the other party. आ गोटे party को save करूची from loss caused to him by conduct of promisor himself or any other person. Either ता conduct पई or any other person ର conduct पई जहा भी loss cause करूची से loss रू save करिया पई जदी other party को करूची which is known as the indemnity holder or promisee, then that's a contract of indemnity. Fire insurance policy करची house owner आउ insurance वाला ताकू देइची, then that's a contract of indemnity जोठी जहा भी loss cause करिवो सेडा को से ताकू indemnify करिया पई किबा loss को cover करिया पई से promise करिची. Okay, now rights of indemnity holder. Yes Kritika को. So I'm really sorry, but मोरो आ ऊपर ही गोटे डाउट थिला. लाइफ Yes, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस. life insurance. यस सर, बिकॉज़ एटा गोटे एमसीक्यू रे आसला कोटोटे जगह रे माने दीटा See, देखौचे. yes. Life insurance is a contingent contract. Contingent contract. It's a contingent contract. Okay, sir. It's not a because सेपे तो मु आपन को insurance देली fire insurance रो example दोछ. Because सेठी that is in fact depending upon what contingent contract ता कोन कहितली. Dependent contract definition कोन कहितली कोंदु. सर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे आंसर Happening or non happening of an event. Yes, so सेठी आपण लाइफ इंश्योरेंस को आपण कहि परिबे नाही इंडेमनिटी. फायर इंश्योरेंस हो काहे कि ना लाइफ एठी गोटे जिंस मन रखिया दरकार जे कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन रो कंडक्ट पई हवा दरकार ना. माने लाइफ इंश्योरेंस रे थोड़ी ताकू मारि दोची से ता कंडक्ट तो थोड़ी से मला. So that's a natural consequence. We may die. So जेतले से मरिबो ताकू मिलिबो. So that for that you can't make a contract of indemnity. Next. So then can we Yes. say that except for life insurance बाकी सब insurances are contract Yes, of indemnity? except for life insurance, Okay. other insurances are the contract of indemnity. Contract of indemnity खाली एतिक भी नुहो, insurance भी नुहो, other examples भी अछि. Ashish, please mute yourself. Other examples भी अछि other than insurance. I would example देलो indemnity रो. I would example देलो insurance रो. Sorry, indemnity रो. के दे परियो? Yes, Abhishek.
Sir, example of contingent contract? That's okay. ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ indemnity ର ଗୋଟେ ପୁରା legal parlance ରେ ଆମେ commonly used ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବ? Sir, indemnity, if a party is telling that I will always indemnify for your loss made by you. So that will be the illustration that we write. Like the principle in itself will be an illustration. Okay, Sir, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ bail ଗୋଟେ ର cases ହେଇପାରିବ କି criminal yes, cases very ରେ? good, very good, very good, very good. Sipra କହିଲେ ନା? Sipra କହିଲା, yes, Yes, very sir. good, very good. So ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କୁ କହୁଛି ଏ ପ୍ରମିସ କରୁଛି କୋର୍ଟ କୁ ଯେ ଯଦି ବି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ର ଟାଇମ ଲସ୍ ହବ ନା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡେମନିଫାଇ କରିବି 30-20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ରଖୁଛି. whether this is not an indemnity, yes or no? It Yes, is an sir. indemnity. It is an indemnity. Okay. Court ku mu ethi A being the indemnifier, court is the indemnity holder. कौन कहूची जो loss cause हेई पारे to the court of the time or money because of the act of any other person, that is the accused, if he does not appear. Okay. So that's Manrakhandu. Bail is a very good example of indemnity. We don't realize, but it's a very good example of indemnity as Sir, well. sir, Yes. regarding this bail example, sir, cannot it be an example of guarantee? See, guarantee when ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଟିକେ ଓଲଟାରେ କହିଦେଲି. ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପାଇଁ ରହିବ ଯଦି then that is whether that is not indemnity. ମୁଁ ଯଦି ଛାଡନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ସିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦର ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୁ ପଳେଇବା, ବଟ ଭାବନ୍ତୁ ଏ କଣ କଲା ନା କୋର୍ଟ କୁ ପ୍ରମିସ କଲା that if I don't come, ମୁଁ ଯୋଉ ପିଆର ବଣ୍ଡ ଟା ନବା, ବେଲ ନବାନି, ଛାଡନ୍ତୁ ପିଆର ବଣ୍ଡ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା. ପିଆର ବଣ୍ଡ ଟା କଣ? ପର୍ସନାଲ ରିକଗ୍ନିଜେନ୍ସ ବଣ୍ଡ. ସେଥିରେ ଏ କୋର୍ଟ କୁ କଲା ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଆର ବଣ୍ଡ ଦଉଛି, ଇଣ୍ଡେମନିଟି ବଣ୍ଡ ଟେ ଦଉଛି. that is an indemnity, right? Abhishek, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଠିଆ ହଉନି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ ହଉଛି ତାହେଲେ Yes, sir. ହଁ ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡେମନିଟି. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଦର ଲୋକ ପାଇଁ କହିଲି ସେଟା ହବନି ଟ୍ରୁ, ବଟ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ ହଉଛି that will be an indemnity. ଅଦର ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ that will be more of guarantee. Okay. ତାପରେ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡେମନିଟି ହୋଲ୍ଡର କଣ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜେस, ସବୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ସମ୍ paid under any compromise of any such suit ସବୁ ଯାକ ସେ ରିକଭର କରି ପାରିବ. Now coming to guarantee. Guarantee ରେ କଣ? ଏଠି ଗୋଟେ ତିନିଟା ପାର୍ଟି ଥାନ୍ତି. ଇଣ୍ଡେମନିଟି ରେ ଯେମିତି ଦିଟା ପାର୍ଟି ଥାଏ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରେ ସେମିତି ତିନିଟା ପାର୍ଟି ଥାନ୍ତି. ତିନିଟା ପାର୍ଟି କଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରେଡିଟର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡେଟର. ଇଏ ଲୋକଟା ଲୋନ ଦେଇଛି, ଇଏ ଲୋକଟା ଲୋନ ନେଇଛି, ହେଲା? ଇଏ ନାଓ ସରି ଏ ଲୋକଟା ଲୋନ ଦେଇଛି, କ୍ରେଡିଟର ଉଲ୍ଟା କହିଲି. ଏ ଲୋକଟା ଲୋନ ଦେଇଛି ଆଉ ଏ ଲୋକଟା ଲୋନ ନେଇଛି. ନାଓ surety says that I am the guarantor, and if he does not pay you, then I will pay you. If B does not pay, then I will pay. That's a guarantee. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରମିସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରିଇମ୍ବର୍ସ କରିବି because of the fact that you have if that person does not pay, then I will pay, then that's a indemnity. ମୁଁ କହିଲି ଯେ give a car to my friend, and if A does not pay, then I will pay. If A does not pay, then I will pay. ସେଠୁ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟା ସପୋଜ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ କହିଲି ଏଟା ହଉଛି my friend and I am saying that give this car to A, and if he does not pay, then I will pay. He is the surety, and ଯିଏ ଦିଏ he is the creditor, ଯିଏ ନିଏ he is the debtor. Okay. Now contract of guarantee କଣ? ଯଦି legal terms ରେ ବୁଝିବା 126 ରେ କଣ କହିଲା? Contract by which one party known as the surety or guarantor promises to the other party known as the creditor to perform
or discharge the liability of a third party in case of his default. हला गोटे पार्टी जे कि श्योरिटी से प्रॉमिस करूची आ गोटे पार्टी हु इज द क्रेडिटर कोन दैट आई विल परफॉर्म और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी मो थर्ड पार्टी रो लायबिलिटी डिस्चार्ज करिवि जदी से डिफॉल्ट कला कॉमन एग्जांपल बेल रो एग्जांपल नियंतु कॉमन एग्जांपल आपण जतले बैंक रे ग्यारंटर रुचंती दैट इज अ गारंटी सो गोटे श्योरिटी जतले रहिबा आपनकर सेते बेले सेटा होची आपनकर गारंटी सेमती आपण ग्यारंटी रो एडा सब प्रोविजंस गुडा कॉरेस्पोंडिंग प्रोविजंस यू प्लीज सी देम किछ एतरे नाही आपण Mortgage hobo sir? यस Mortgage hobo sir? Mortgage hobo sir? नो मॉर्गेज रे आपण प्रॉपर्टी आपण दोचंती सिक्योरिटी हिसाब रे एठी गोटे लोक श्योरिटी रहबो बुझ परछन एठी गोटे लोक श्योरिटी रहबो मॉर्गेज रे मु कोन कहू जे मु लोन टे दउची आ गोटे मु गोटे लोन टे नउची मो जमीटा तम पाखरे बंधा पकेची जदी तो मु पैसा न दे परली तमे जमीटा बिकी कि नै जिवो बट एठी जमी दिया होनी एठी आ गोटे लोक आसी कहूची देखो आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट इन केस दिस पर्सन इज नॉट एबल टू पे I will give you the amount. I will give you that particular amount. That is a guarantee when one person stands as a surety for another. That's a guarantee. Okay. So the surety ro rights and liabilities kon achi jetale on payment re say benefit of creditor surety securities implied promise to indemnify surety केतल डिस्चार्ज केतल नॉट डिस्चार्ज एटा टिके टिके देखि देबे हम खाली कांसेप्ट ही बुझिया दरकार क्वेश्चन जदी भितरु गोटे दिटा आसला आमे एते मन रखी भी हबनी जस्ट टिके देखि देथिबे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव पई टिके टिके देखि देथिबे नाउ कांसेप्ट ऑफ को श्योरिटी कोन को श्योरिटी जेतेले दीटा लोक श्योरिटी पड़थिबे ताकू को श्योरिटी कहा जाय दे आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली आ गोटे श्योरिटी को रिलीज करले दैट डज नॉट मीन दैट अदर्स आर डिस्चार्ज एंड liability of co-surety is bound in different sums जति ताकू डिफरेंट सम रो लायबिलिटी रखाई दिबो ताले ताकू डिफरेंट लायबिलिटी भी पड़िबो माने ए बी को गोटे लोन देछि ता पई दी जण श्योरिटी छथि सी आउ डी ताकू कहा जाय को श्योरिटी हला जति ए सी को भी रिलीज कर देला डज नॉट मीन दैट डी विल बी रिलीज्ड सी कैन बी रिलीज्ड बट डी स्टिल भी रही पारिबो तापरे नॉर्मली सी आउ डी इक्वली कंट्रीब्यूट करिया कथा ये 50% और सी 50% बट जदी जेतेले कॉन्ट्रैक्ट हेलाण को सेतेले को लिखा है सी दबो 40% और डी दबो 60% दे विल कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली बोली कहिला अपन 138 146 एंड 147 ओके सो इंडेमनिटी और गारंटी भितर डिफरेंस जदी कोन इंडेमनिटी इज द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन वेयर वन पार्टी प्रॉमिसेस टू कंपेंसेट फॉर द पोटेंशियल लॉस और डैमेज इनकर्ड बाय अनदर पार्टी गारंटी रे कोन मेड बाय थर्ड पार्टी टू कवर अ डेट और ऑब्लिगेशन ऑफ अनदर पार्टी if they fail to fulfill their obligation eta gote primary obligation that is independent of any other obligation guarantee is a secondary obligation ta mane guarantee re ago gote obligation achi je a b ku paisa dabo jodi se न दबो ताहेले c ताकू दबो so it is c रो secondary obligation primary obligation कार जे लोन टा नेछि किंतु indemnity रे आपनकर primary obligation that is not eta सब guarantee रे okay बट इंडेमनिटी रे आपनकर प्राइमरी ऑब्लिगेशन ए बी को ही कहिछि जे जदी निया लगला किछि हला ताले मु देबी बोली कहिछि सो एटा रे प्राइमरी ऑब्लिगेशन इंडेमनिटी रे दीटा पार्टी सेटा होछि बेस्ट माने सबडु बड़ डिफरेंस इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड पार्टी एंड गारंटी रे तीनटा पार्टी क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर एंड गारंटर रिस्क इंडेमनिफायर इज लायबल फॉर द लॉस सफर्ड बाय द इंडेमनिफाइड पार्टी एंड गारंटर इज लायबल फॉर द प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट which is generally considered riskier एठी आउरी बेसी रिस्क काइना सीए न देले मु देबी ओके यो कोंदी माननी पड़िया जो ओडिया रे कोथे माननी पड़िया बोले कोंदी हां सेटा आपण केबे पड़िबले purpose of indemnity is to compensate for a loss and purpose of guarantee is to ensure the performance of an obligation example of indemnity what is insurance example of guarantee is a bank guarantee next bailment kono bailment is where there is a delivery of goods by one party gote party kon karuchi kichi goods douchi for some purpose on contract to the other party je douchi taku bailer kaiba and je nouchi taku baili kaiba so that when the purpose is accomplished
it shall be returned according to the directions of the bailor. A B को तार कोट गुडा को वॉश करिया पे ड्राई वॉश करिया पे दोउची. Those are given as a bailor. जे दोउची से bailor जो ड्राई वॉश वाला से होची बेली. कोन पे दोउचंती कोन ताकू पिंधिया पे दोउचंती ना दोउचंती जेते बेले से पर्पस टा अकम्प्लिश हे जीवो तामन जेते बेले धुआ सरी जीवो सी मते रिटर्न कर दबो और एटलीस्ट एज पर माय डायरेक्शन से आउ काकू भी दे देले भी चलिबो बट ही मस्ट रिटर्न इट. That is called contract of bailment. One party known as the bailor delivers the good for some purpose on contract to other party known as the bailee so that when the purpose is accomplished it shall be returned according to the directions of the bailor. आपण कार वॉश पे दोउचंती that is a bailment. So आपण watch repair पे दोउचंती that is a bailment. So bailment can be delivery of goods जेतले दोउचंती आ गोटे पार्टी को कोन पे गोटे स्पेसिफिक पर्पस पे so that जत्ते बेले कोटे कॉन्ट्रैक्ट करी गोटे रिसिप्ट आपन से दोउची जत्ते बेले से वॉच टा रिपेयर कर दबो आपन से रिसिप्ट देबे आपन से सेटा फेरी दबो. That is a classic bailments example. ओके बेलर आउ बेली दीटा पार्टी थाए. इस्त्री वाला को लॉन्ड्री वाला को दोउचंती जहा करचंती that is bailment. ओके नाउ बेलर बेली रो राइट्स एंड लायबिलिटीज अछि. यस आपण सेटा देखिबे जदि बेलर ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल जते बेले आपनकर बेलर जदि आपनकर किछि फॉल्ट अछि देन आपण सेटा को आपण को सेटा कोन डिस्क्लोज करिवा दरकार काना बेलर रो गोटे एग्जांपल होची हायर बी. हायर कोन आपण भाबुथि जो भाबंतु ए जो कोन हेडा होची रेव कार अछि ना रेव कार आउट कोन अछि सेटा आउट कोन अछि कोन कोन से नाडा ए जो कार ऑन रेंट कार गुडा को रेंट रे दियाउची जो आपन को कार दे दुचंती आपन चलेबे चलेला परे आपन आसी की ताको रिटर्न करिवे. सो सेठी भी गोटे आपन बेलमेंट भले ही होची सी भी आपन को कार दोची कोन पे कार ता चलेबे कार चलला परे आपन ताको रिटर्न कर देबे. सो जदी एठी बेलर जानि छि डिफॉल्ट विषय रे देन इफ ही डज नॉट डिस्क्लोजेस जदी तापरे डैमेज किछि हैला कार रो ब्रेक फेल अछि बट से जणोनी आउ किछि डैमेज हैला then he will be liable bailor will be liable. किंतु जदि if goods हां सेठी डिस्क्लोज सेठी थाउ न थाउ जणैबो माने तारो बेलर टा अवेयर अछि जदि कि न थाउ जदि ताले भी जणै पड़िबो हायर केस रे. किंतु बेलर केस रे आपन को जदि अवेयर अछंती ताहाले जणैबे इफ अवेयर ताहाले जणैबे नले जणैया दरकार हला. बेलर केस रे बेलमेंट केस रे आपण जदी डिफॉल्ट विषय रे अवेयर अछि ताले जणैबे. हायर केस रे जदी डिफॉल्ट विषय रे अवेयर थांतु न थांतु आपण जदी न जणैबे ताले यू विल बी लायबल फॉर डैमेजेस. राइट्स एंड लायबिलिटीज टिके देखि देबे 148 रु 171 रे सब जगह राइट्स एंड लायबिलिटीज अछि. राइट्स कोन अछि बेलर रो जे बेलमेंट को टर्मिनेट करि परिबो आउ कोन इंक्रीज करि परिबो प्रॉफिट रु लायबिलिटी संति कोन जे फॉल्ट जदि थिबो ताको डिस्क्लोज करिवो आउ सेमति राइट्स कोन बेली रो जे लॉस पई लायबल हबो नाही नेसेसरी एक्सपेंस रो रीपेमेंट पाइबो इन सब जहा सब देछि से सब जाक अपन टिके देखि देबे. नाउ इफेक्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गुड्स एठी कहला जदि बेलीटा बेलर रो जिंस को ता जिंस सहित मिसई देला ताले तार इफेक्ट कोन हो. ओके कहला जदि 155 कहला विथ बेलर्स कंसेंट मिसैला बोथ हैव इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर्स. माने जदि आपनकर बेलर आपन को भाबंतु आपन को गोटे लोक कोन करथिला ना से कोची जाउची ता घर को कोची मोर ए दी बस्ता गोड़ी आसीवार अछि से दी बस्ता गोड़ी सॉरी दी ट्रक गोड़ी आसीवार अछि दी ट्रक गोड़ी तोर जो गोड़ी बस्ता अछि ता धरे पके दोची मु आसला को पुनी नै जी. सो बेलर कंसेंट सहित मिसाई छी सेठी जेति की प्रोपोर्शन रे थिबो से सेति की प्रोपोर्शन रे मिसी गला परे सेति की रु से नै की जीवो. जदि विदाउट बेलर्स कंसेंट आपण मिसैले ताले जदि सेपरेबल करी हबो then in that case bail is bound to bear the expense of the separation or division or any damage arising from the mixture. किंतु जदि separable नुह ताले bail liable to compensate to bailer for the loss of the goods. माने नॉर्मली बेली मिसै परिबो नाही
किंतु जदि आपण एमितिया जिंस जोडा कि आपण सेपरेबल करि परिबे नाही देन इन दैट केस आपण पूरा कंपेंसेट देबे जदि सेपरेट करि हेबे ताले सेपरेट करिवार जहा कॉस्टटा सेटा आपण बियर करिवे आपण को किछि बॉल देकी जाईछि कि ए आपण किछि बॉल देकी जाईछि आपण से बॉल उडाको आपणकर जो बॉल रो स्टैक थिला ता भीतर रखि देले तो नाउ ताको सेपरेट करिया पे जो टाइम कि गोटे लोक जहा भी लोक लागिला से पैसाटा आपण निजे बियर करियो जदि आपण ता बिना कंसेंट रे मिसे दिछंती किंतु भाबंतु आपण को किछि अट्टा देकी जाईछि अट्टा 4 किलो देथिला आपण को अट्टा डबा रे आपण रखि देले तले आपण कोन काढी कि आउ करि परिबे सेपरेट करि परिबे सो सेठी आपण कंपेंसेट करिया पड़िबो फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स और जदि से एग्री करिवो जे हां ठीक अछि मिसेले चलिबो तू ताकू ताधुरु ही काढी कि दे दे देन 155 हिसाब रे से काढी कि देले भी दैट इज आल्सो फाइन सेमदी जेतेले ग्रेचुइटियस बेलमेंट थाए सेतेले बेलर और बेली जे भी मरी गले टर्मिनेट हेई जाए ओके नाउ राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बिल्ड एठी कोन गेला जदी जे बेलर छडा जदी आउ किए क्लेम करूची ताले से अप्लाई करि परिबो कोर्ट को जे तमे गुड्सटा बेलर को दियोनी आउ से टाइटल रो गुड्स रो टाइटल डिसाइड करो द फाइंडर ऑफ गुड्स कोन करि परिबो फाइंडर ऑफ गुड्स कोन करि परिबो तार ट्रबल और एक्सपेंस पई से कोन करि परिबो गुड्स को रिटर्न करि परिबो अंटिल ही रिसीव सच कंपेंसेशन आ ओनर जदी गोटे रिवार्ड किछि अनाउंस करथिबो ताले से रिवार्ड पई भी से सु करि परिबो आ सेटा को रिटर्न करि परिबो अंटिल ही रिसीव्स दैट रिवार्ड कहितला मोर कुकुर जे हजि गले हजि जैछि मो कुकुर बुझी आनि कि दबो ताको 5000 टका देबी जेपन से 5000 टका न पाइछि से सेटा को रखि परिबो किमा रीजनेबल कंपेंसेशन जहा तार लॉस कॉज हला जहा तार एक्सपेंस लागिला कुकुर को एना 20 दिन खुइछि तो से पैसाटा से दबो ओके आउ फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल मे सेल इट कहला कोन व्हेन द थिंग इज ऑन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और और losing greater part of its value or when the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value सेतले से बिकी देई परिबो हला जेतेले आपण भाबंतु आपण को गोटे आपण को मिलिला तारो गोटे एक एक बस्ताटे मिल एक बस्ता नो एक गोटे पेटीटे मिलला सो एक पेटीटा आपण जदी न बिकी रखिबे ताल तो खराब हे जिवो तो सेठी आपण बिकी देई परिबो बोली 169 रे कहला और सपोज आपण गोटे गाईटे मिलिछि गाईटे रास्ता ले जाउतला मिलला ते गाई को आपण खोई खोउचंती 6 मास लानी खोउचंती ए आसुनाती तो गाई रो कॉस्ट सपोज 20000 आपण किंतु सेठी खर्च कर सालेनी केते 15000 खर्च कर सालेनी सो 2/3 ऑलरेडी खर्च करलेनी खर्च कर सालेनी ताले आपण भी सेठा को बिकी देई पारिबे बोली कहिला आपनकर 169 रे 167 168 and 169 are talking about this now general lien particular lien kono general lien kono it alludes to the right to keep possession of the goods belonging to other against general balance of account एठी rights of bailey to retain specific goods bailed for non payment of amount एठी आपण जनरल लियन कोन आपनकर किछि पैसा नेइछि आ से दोउनी आपण कोन करचंती किछि भी जिंस तार रखि दोचनी सेडा होछि जनरल लियन पर्टिकुलर लियन कोन जेतेले आपण को बेलर किछि देइथिला आ तार पैसाटा से देइनी ताले आपण रिटर्न करचंती के पर्यंत जे पर्यंत ता पैसाटा देइनी से पर्यंत ओके it is exercised by banker policy holder policy broker war finger attorney it is used by belly pony pledgee हवा कथा न एटा pony कहया कथा agent finder of goods partner unpaid seller okay now सरला एटा होची आपनकर ये तापर आसी हमर pledge कोन सेमती pledge कोन pledge is a kind of bailment only so all pledges are bailment and but all bailment are not pledge so bailment आपनकर ये ता भीतर रोची pledge ता भीतर रोची आपनकर pledge ओके bailment होची कोन genus and pledge ता होची species so what is a pledge होची जदी गोटे bailment रे गोटे पार्टी कोन करूची अदर पार्टी को सिक्योरिटी भलिया गोटे जिंस दोची for payment of debt or performance of promise that's a bailment that's a pledge मु कोन करूची आपन को मते मु गली ए गला बी पाखु को गोटे जो आपन आगुर देखथिबे सुना बंधा पकेगी एबे भी हो चलची गोल्ड लोन जो गोल्ड मु दोची गोल्ड देकी आनुची तादरु ताठु 5 लाख टका आनली तो दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ pledge जो थरे आपन
ताकू दोचंदी गोटे जिंस कोन पई सेटा सिक्योरिटी भलिया रो फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पई गोटे जो जिंस दोचंदी सेटा ही होची आपनकर कोन दैट इज ओनली योर दैट इज ए प्लेज जे पार्टी दोची ताकू कोंती पॉनर बेलर भी से और जे पार्टी नोची जो गुमास्ता से होची पॉनी ओके नाउ मॉर्गेज आउ प्लेज भितर सेम सिमिलरिटी अछि कोन प्लेज ता होची कोन मूवेबल प्रॉपर्टी रो मॉर्गेज होची इमूवेबल प्रॉपर्टी रो ओके मॉर्गेज इज गवर्न बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट काना सेथरे भी आपण गोटे लोन को सिक्योर करचंदी किंतु सेथरे गोटे इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर करी करचंदी प्लेज रे आपण भी गोटे लोन को किबा डेट को किबा गोटे प्रॉमिस को सिक्योर करचंदी बट सेठी गोटे मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योर करचंदी एंड दैट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओके सेंदी पॉनर रो किछि राइट्स अछि पॉनर रो पॉनी रो किछि राइट्स अछि सेटा भी टिके देखि लेबे आपण यस एटा भी टिके देखि देबे स्टेटस ऑफ प्लेज ओके yes suits by bailey or bailers against wrongdoers kon कहला जदि third person wrongfully deprives the bailey of the use of possession of the goods bailed or does them an injury ताले सेठी सूट आनी परिबो के बेलर और बेली wrongdoer against आनी परिबो आउ जो relief or compensation मिलिबो that will be apportioned between the bailor and bailey according to their respective interest तांकर जति के respective interest अछि तार जति के बेलर बेली रो किछि चार्ज थिबो से पैसाटा से नै जिवो आ बाकी बेलर पाई जिवो ऑर्डिनरली अधिका बेलर पाइबो नेक्स्ट कमिंग टू एजेंसी एजेंसी इज based on the maxim qui facet per alium facet per se जे जहा थ्रू रे एक्ट करे he it is presumed as if he acts himself one who acts through another acts himself बोली धरा जाए and another concept is responded superior that is let the master answer जे मास्टर ताकू ही आंसर करबा दरकार सो सेठी गोटे पार्टी थाए कि प्रिंसिपल से अदर पार्टी को एम्प्लॉय करे who is known as the agent कोन पई एम्प्लॉय करे so that he can represent him or work on his behalf as in dealings with the third persons मो बापा मते पठेले घरु जाईकी तू एटा जाईकी आठू सौदा आनी के आसीबो फॉर दैट पर्पस आई एम द एजेंट मु मो ड्राइवर को कहूची तू गाडीटा नै की जा गाडी नै की मो छुआ को स्कूल रे छाडी की आसे दैट इज that for that purpose my driver is the agent so सेठी गोटे पार्टी प्रिंसिपल अदर पार्टी को रिप्रेजेंट करिया पे कहूची on his behalf or as in dealings with the third person and that is known as agency प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन धरा जाए एजेंट किए जे की एम्प्लॉय हेची कोन पई to do an act for another or to represent another in dealings of the third person the person for whom such act is done or who is to be represented is called the principal किए करि परिबो एजेंट एम्प्लॉय एज ऑफ मेजॉरिटी और साउंड माइंड थिले ही से एम्प्लॉय करि परिबो से ही प्रिंसिपल हेई परिबो आ किए एजेंट हेई परिबो एजेंट किंतु केही भी हेई परिबे एनी थर्ड पर्सन में बिकम एन एजेंट किछि केही भी हेई परिबे किंतु जदि से मेजॉरिटी और साउंड माइंड रो नुहो ताले से प्रिंसिपल पाखरे रिस्पांसिबल हबनी एजेंट तो हेई परिबो but he will not be responsible on behalf on before the principal consideration दरकार की consideration not necessary to create an agency मो बापा कोन मते सौदा पठलाडू पैसा दे पठांती फ्री रे पठांती so that is not really needed now extent of agent's authority एजेंट केते प्रकार जो केते पर्यंत काम करि परिबो को प्रकार काम करि परिबो से कहला एजेंट्स अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हला यदि इम्प्लाइड और एक्सप्रेस अथॉरिटी डिपेंड करे तारी ऊपर डिपेंड करे एजेंट केते काम करि परिबो जनरल अथॉरिटी कोन कहूची जहां भी लॉफुल जिंस सब करि परिबो एंड यूजुअल इट डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सब करि परिबो बट आउ एजेंट इमरजेंसी केस रे टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस और पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू से कामोडा भी से करि परिबो ता छडा अलगा किछि करि परिबो नै अलगा जदि किछि कला हमने एक्सप्रेसली जहा कोइतला से सब करिवो ता सहित लॉफुल थिंग्स यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस आउ इमरजेंसी रे जहा सेव करिया पे प्रिंसिपल को दरकार सेतिक करिवो ता छडा अलगा किछि करिवो नाही ना सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कोन जेतेले एजेंट कैन नॉट डेलीगेट अनलेस by the ordinary custom of trade from the nature of the agency that is a sub agent अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कोन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होजी
जदि एजेंट आउ जण काहाकू एजेंट करूची देन दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट टिके टिके देखि लिथिबे नॉट दैट इंपोर्टेंट ओके सब एजेंट नॉर्मली ओरिजिनल एजेंट कंट्रोल करे आउ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल डायरेक्टली कंट्रोल करे रेस्पोंसिबिलिटी कोन सब एजेंट रो ओरिजिनल एजेंट को आर होची प्रिंसिपल को डायरेक्टली प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोन प्रिविटी विथ ओरिजिनल एजेंट एंड प्रिविटी विथ प्रिंसिपल remuneration paid by original agent liable for ye liable to original agent controlled by the principal appointed by original agent appointed by the original agent from the explicit or implied authority of the principal responsibility towards third party no direct contractual relationship with principal direct sub agent माने basically agent आउ जणो काहाकू दे दीची हैला ताकू कह जाय सब agent बट जेतेबेले प्रिंसिपल एजेंट को करची आ कहिची जे तू करा और काहा थ्रू रे करा सेठी जदी करा हला सब्स्टिट्यूटेड माने जोठी डेलीगेशन रो पावर अछि सेटा को सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जोठी डेलीगेशन रो पावर नाही किमा से करची ताहाले सेटा होची सब एजेंट ओके नाउ one is ratification okay ratification it is not rectification please get it is ratification okay कोन कहूची जे ता अथॉरिटी बिना गोटे लोक किछि काम करि दउची ताले से कोन करि परिबो ताकू आइदर कहि परिबो हां मु ताकू एक्सेप्ट करूची और कोन कहिबो जे नाही आई एम डिसोनिंग इट आई हैव नॉट डन इट ओके सो बापा मते पठेले गाडी नै की जे तू जाई की एडा नै की आसे मु जदी ता भितरु से अलगा गोटे को जगह को पळेली एंड देयर इज अ लॉस कॉज्ड बाय मी देन माय फादर मे आइदर चूज टू रैटिफाई द सेम एंड से हां ठीक अछि से जहा करिछि ता पई मु लायबल हेबी और ही मे डिसोन मी ही मे से नो आई एम नॉट लायबल फॉर हिज व्हाटएवर ही हैज डन सो सेठी कोन कहूची रैटिफिकेशन एक्सप्रेस और इंप्लाइड हवा दरकार आउ नॉलेज थिबा दरकार फॉर वैलिड रैटिफिकेशन और रैटिफाई जदी कला ताले जो अनऑथराइज्ड एक्ट ता थिबो सेटा एबे ऑथराइज हे जाए बट अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजोर ए थर्ड पर्सन अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजोर ए थर्ड पर्सन बोली आपण जानिबा ओके now again coming to termination of agency केतले टर्मिनेट हुए प्रिंसिपल टर्मिनेट करि परिबो केमती तारो अथॉरिटी को रिवोक करिकी एजेंट केतले टर्मिनेट करि परिबो जे रिनाउंसिंग करिकी से एजेंसी को और कंप्लीटिंग दी बिजनेस ऑफ एजेंसी आइदर कामडा जा दियाइतला सेडो कंप्लीट करिकी किबा कामडा को रिनाउंस करिकी प्रिंसिपल एजेंट जदी मरि गले किबा अनसाउंड माइंड हे गला प्रिंसिपल देन आल्सो दैट टर्मिनेट्स आ प्रिंसिपल जदी इंसॉल्वेंट हे गला देन आल्सो इट टर्मिनेट्स ओके एंड केतेले प्रिंसिपल एजेंट रो अथॉरिटी को रिवोक करि परिबो नाही जोठी जेतेले एजेंट रो इंटरेस्ट अछि सब्जेक्ट मैटर रे एंड अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड सेतेले टर्मिनेट करि परिबो नाही आ केतेले टर्मिनेट करि परिबो एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल सेतेले आपण करि परिबे आ कंपेंसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट एक दूसरे को दिया दी हेबे जदी रिवोकेशन करची ताले से एजेंट को दबो आ जदी रिनंसिएशन करची ताले एजेंट प्रिंसिपल को कंपेंसेशन दबो ओके नाउ ए टर्मिनेशन केमती रीजनेबल नोटिस दबो तापरे एक्सप्रेस और इंप्लाइड वे रे करि परिबो एंड जेमती से कहउचंदी सेमती सेटा हेइ परिबो बोली कहउची ओके दिस इज इट एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल एटी कहला एजेंट रो कोन कोन ड्यूटी अछि जे प्रिंसिपल बिजनेस करिवो जेति ऑर्डिनरी स्किल एंड इंटेलिजेंस करिवो प्रॉपर अकाउंट्स दबो कम्युनिकेट करिवो प्रिंसिपल सहित आउ निज डीलिंग्स गुडा ठीक रे रखिवो बेनिफिट जदी किछि पाउछि ताकु से जणैबो तापरे कोन रेम्युनरेशन ड्यू पाइले से पाइबो आउ मिसकंडक्ट बिजनेस पई किछि रेम्युनरेशन पाइबोनी ए सबु रहिला आपनकर ते आ सेमति प्रिंसिपल ड्यूटी एजेंट को कोन एजेंट को इंडेमनिफाइड करिवो in consequence of lawful act आउ indemnify करिवो against consequences of act done in good faith किंतु एम्प्लॉयर लायबिलिटी नाही जदी से क्रिमिनल एक्ट करिवो कि एजेंट आउ जदी प्रिंसिपल रो नेग्लेक्ट पई किछि एजेंट को इंजुरी होउची ता पई भी से कंपेंसेट करिवो ओके enforcement and consequence of agents contracts same legal consequences as if the contracts had been entered into by the principal जदि एजेंट किछि कॉन्ट्रैक्ट करूची ताले सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस आसीबो एज इफ प्रिंसिपल हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट काहे ना वन हु एक्ट्स थ्रू हिमसेल्फ एक्ट्स हिमसेल्फ सेतले प्रिंसिपल केतले बाउंड हबो व्हेन ही इज ऑथराइज्ड टू डू एंड व्हेन द पार्ट ऑफ व्हाट ही डज
which is within his authority can be separated from the part which is beyond his authority. But ketebele not bound, agent jetebele does more than what he is authorized to do. ମୁଁ କହିଥିଲି ନବା ପାଇଁ ଅଫିସ କୁ କାର ସେ ନେଇକି ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ କାମରେ ତାର ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଡ୍ରାଇଭର, ତାହେଲେ ସେଠି he is not authorized to do that. I will not be liable for that. Or when he does beyond the scope of his authority cannot be separated from what is within it, তাহলে সেটি I am not liable. Consequence of notice given to agent have the same legal consequence as if it had been given to the principal. Notice to agent is notice to principal ବୋଲି ଧରାଯିବ. Okay. Our kichi miscellaneous section dela that agent cannot personally enforce nor be bound by contracts on behalf of the principal. Rights of the parties to a contract made by agent not disclosed. एमती किछि देला. Liability of pretended agent जदि किए निजु को pretend करूची agent भलिया ताले तार कोन liability. Person falsely contracting as agent not entitled to performance. Effect on agreement or of misrepresentation of fraud by agent as if made by principal. ए सबु गुडा हला miscellaneous section of agent, and that concludes our contract act. Contract act हमें जानले we studied for the purpose of prelims. So section गुडा तो आपण टिके मन रखिया को पड़ियो जदी section ऊपर question आसीबो नले at least concepts now you know it in some detail. At least you'll be able to recollect when you see the option, I hope. Okay, so if no further doubt, we'll end this session and meet tomorrow for another marathon. That will be probably Hindu Succession Act. Okay, thank you all. Yes, Priyanka, tell me. Sir, se jo communication of acceptance रे सर ए बी को जेतेबेले ऑफर करथिला बी जेतेबेले एक्सेप्टेंस ता देला ए को पहुंचीबा पूर्वरु आपण सर कहले कि से एक्सेप्टेंस ता को रिवोक करि परिबो सर से तो Yes. एक्सेप्टेंस के बदरे अनअवेयर थिबो ना तो सेटा को भी रिवोक करि परिबो हां अनअवेयर थिले भी ताको रिवोक करिवो काना रिवोक ता आगो हवा दरकार एक्सेप्टेंस हवा आगु सर नहीं से एक्सेप्टेंस करि सरी जी ए अगेंस्ट रे कंप्लीट ही सरी जी बट सर बी माने बी अगेंस्ट रे कंप्लीट हबा पूर्वरु ए ताको रिवोक करिवो बी आगुरु हबा बी पूर्वरु हबा पूर्वरु हां बी अगेंस्ट हबा पूर्वरु ए कंप्लीट कर परियो. यस बुझ पलेनी ना कोन रह गेला सिटी आज्ञा सर सेटा बुझी होनी सर जेतेबेले ए पाखो को आसी ही नथिबो तो से सेटा रिवोक करिवो केमती बिकॉज़ ता अगेंस्ट रे तो कंप्लीट ही सरी छी ना नहीं बी अगेंस्ट रे कंप्लीट हेइनी माने के रिवोक करिवो एक्सेप्टेंस ता बी रिवोक ए करिवो. अरे ए अगेंस्ट तो कंप्लीट हे गेलानी ऑलरेडी आज्ञा जेतेले से पठै देला सेतेले ए अगेंस्ट रे कंप्लीट हे सालानी तनु ए तो रिवोक करि परिबोनी बी रिवोक सेटा करिवो सर केतेले हां बी रिवोक करिवो केतेले बी ए अगेंस्ट रे कंप्लीट हेइनी जेतेले बी अगेंस्ट रे कंप्लीट हेइनी सेतेबेले पर्यंत बी रिवोक करि परिबो काना बी ए आज्ञा पर्यंत फ्री सर अछि रिवोक करिया पे बुझ परलो. आज्ञा सर हां ए सर और रिवोक करि. यस सर 184 टा जेमती आपण कहले कि हु मे बी एन एजेंट एंड तापरे जो कहले कि इज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट आपण कहले कि जदी मेजॉरिटी न हेले भी से एजेंट हे परिबे सो सर 184 टा आउथरे टिके बुझे दिथन नहीं से कहूची जे केही भी एजेंट हेई परिबे बट जदी से मेजर नहीं कि साउंड माइंड रो नहीं ताहले से प्रिंसिपल पाखरे आ लायबल होबो नहीं हेई त परिबो किंतु लायबल होबो नहीं बुझ परछंती परे काल सकाळे कहि परिबेनी but no person who is not of the age of majority and of sound mind can become an agent no can become an agent to be liable to the principal can become an agent to be liable to the principal that is written okay हेई परिबोनी बोली तो लिखाइनी कोठी okay sir okay हेई परिबो but he will not be liable to the principal right sir okay thank you sir thank you we will meet tomorrow Hindu Succession Act marathon tomorrow thank you Thank you, sir. thank you